सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन जे ख़ुसूसी प्रोग्राम में इमदाद अली ओढो अव्हां खे भलीकार चवां थो। सामईन, गुज़िरियल छंछरु ॾींहुं 15 अक्टूबर लंदन में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां सिंध बाबति 28वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी गुज़री। इन ई मौक़े ते वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ईंदड़ 2 सालनि लाइ चूंडियल उहिदेदारनि जो ऐलान कयो वियो, जंहिं मूजिबि साइण रुबीना शेख चेयरवुमेन, लखू लोहाणो जनरल सेक्रेटरी, उमेद लगारी सीनियर वाइस चेयरमैन, ज़ुबैर भमरो वाइस चेयरमैन, आसिफ पंवर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, फरहान मेमण इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, डॉक्टर हिदायत भुट्टो ऑर्गेनाइज़र यूरोप। चूंडियल उहिदेदारनि खां भारत दादलाणी हलफ़ खणायो। 28वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते रुबीना शेख चेयरवुमेन वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, सदफ सोलंगी इंटरनेशनल सिंधी वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन, साइण दीपा वाधवाणी लेखक ऐं समाज सुधारक अहमदाबाद भारत, अलाइस अल्बेनिया लेखक ऐं एडिटर, पीटर थेचियल इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़, इमदाद अली ओढो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन, भावना राजपाल PhD वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी लंदन, रियाज़ सुहेल BBC एट कराची, जावेद सूमरो BBC उर्दू सर्विस लंदन, हाजन कलोड़ो WSC कनाडा चैप्टर, टिम डेगिन जर्नलिस्ट एशियन अफेयर UK, साइण इरशाद अब्बासी इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ USA, सुहेल मेमण सीनियर जर्नलिस्ट सिंध, डॉक्टर सग़ीर शेख WSC USA, गुलसनाई सिंधी संगत UK, अब्दुल सत्तार सूमरो SS UK, आसिफ पंवर कनाडा चैप्टर, डॉक्टर हिदायत भुट्टो ऑर्गेनाइज़र WSC यूरोप चैप्टर, फर्नांडो बर्जिस UNPO, ज़ाकिर सादात यूनिटी अफगानिस्तान मूवमेंट UK, रघुवीर सिंह सोढो
इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ जोधपुर भारत, जावेद मेंगल इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ बलूचिस्तान, डॉक्टर लखू लोहाणो जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जन ख़िताब कयो। मुक़ररीन सिंध जे इख़्तियारनि, वसीलनि ऐं धरतीअ जी मालिकी सिंधियुनि जे हवाले करण जी घुर कई वई। बलूचिस्तान अंदरि संगीन इंसानी भञकड़ियुनि जी निशानदही कई वई। इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ तंज़ीमुनि ऐं मुल्कनि जो ध्यानु छिकायो वियो। चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपेक खे सिंध ऐं बलूचिस्तान लाइ तबाह कुन करार ॾिनो वियो ऐं इन मनसूबे जी हर मुहाज़ ते मज़ामत जो ऐलान कयो वियो। सामईन, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पारां 28वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जी मुकमिल कार्रवाई अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। सभिनी खां पहिरियों कॉन्फ्रेंस जी फॉर्मल शुरूआत थी रही आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त हिन साल असांजी कॉन्फ्रेंस जी प्रोग्राम चेयर हुई डॉक्टर रुबीना शेख ऐं आउं उनखे फॉर्मली डॉक्टर रुबीना शेख खे चवंदुसि त हू कॉन्फ्रेंस जो जी स्टार्ट करे। डॉक्टर रुबीना शेख। World Sindhi Congress every year organizes an international conference to discuss and raise awareness among the international community about the grave situation of Sindhis in Pakistan. This year, the conference seeks to highlight the rights of Sindhi people on their natural resources, land, and territories for their survival. More than 70% of Sindhis in rural areas are living in abject poverty, despite Sindh being one of the richest province in the Pakistan and contributes more than 69% of federal budget to Pakistan, and we still remain one of the poorest. Illegal land grabbing and mismanagement of Sindhi natural resources continue to rise in Pakistan. We see number of unusual projects like CPAC and Baria Town, that sort of projects keep coming. Year 2015 to 16 continued to be the worst year for minorities in Sindh and for human rights defenders as well. There's a number of attacks on minorities and their worship places is continue. This conference will provide a platform to discuss, explore, and develop a strategy to address the exploitation of Sindh resources firstly, and also look at the human rights defenders issues in Sindh and wider Pakistan. Conference will also focus on to understand the actors and the factors who are responsible for the recent extrajudicial killing and extreme religious extremism in Pakistan. And it will explore its detrimental impact on regional peace and security. So we need to look at the more global context, that how the security situation or the fundamentalism in Pakistan has impact on the global context. WSC invites human rights groups, academics, and international community to submit generally papers and speeches and talks, and this year same. We have divided today's session in three sections or topics in a way. We also recognize that there's so many fronts of activism needed and required in Sindh. So the first session we have looked at more about advancement of Sindhis, but in the context of that how diaspora is playing a role in that. So in UK, USA, or America, and Sindh and India specifically, how some way they are doing their own bit, which contributes to the advancement of Sindhi. So the first session is around that. And we recognize that their role in the promotion of Sindhis is very critical in diaspora community. Session 2 is very much focused on the land and the natural resources and environmental justice issue. So how those factors and the exploitation of resources and mismanagement has impact. And if we need to look at these areas, how advancement of Sindhi nation is related with these issues. Unfortunately, despite of all natural resources in Sindh,
we have been, as I mentioned, is categorized one of the poorest nation after the Balochistan. And third session is around the advancement of Sindhi nation, looking at the defending human rights and achieving sovereignty. This is more around that how right of self-determination can play a role in terms of achieving advancement of Sindhis. Because this is a very critical point, and I would like to focus on that point, that many people say as to that why we are not opening new schools or doing a welfare jobs and all those development issues, which are very critical, which are very necessary. But we need to look at the root cause of those deprivation and how it links with right of self-determination, and how right of self-determination actually give us empowerment and enability to look at these areas that which we are trying to address piece by piece. So now I will hand over to the formal session moderator, Ada Gulak. Thank you. Thank you very much, Adi. I start my session with two beautiful lines of Shah Abdul Latif Bhittai, who has given the universal message in those two lines, that Saim Sadai Kari Mathe Sindhu Sukar, Dost Mitha Dildar, Alam Sababad Kari. In these two lines, he doesn't only talk about the Sindh, but he talks about the universe, that may be peace on the whole world, whole universe. So we start our first session, and first session, as Dr. Rubina Sheikh said, that is advancement of Sindhi nation, but mostly focusing on diaspora working together. Latif says, Sajjan and Sani keh unasi visre, haftni ke hoy, watan jin visaryo. I hope we all overseas Sindhi who are sitting here, we do miss badly our motherland Sindh. Saim Dadodo, I don't have words to express the work he has done throughout his life. Saim Dadodo has been very active from his student life in Sindh national movement, and he is well-known journalist. He is founder of Awami Awaz. Throughout his life, he has worked hard, and even when he came in the UK, he did not sit for one day. This elderly gentleman works up to 2-3 o'clock at night. Again, Latif comes in my mind. Shah Abdul Latif says, Kharkana lahe sukhna suta kadain. Kharkana lahe sukhna suta kadain. O sirwaye khaur inke pandajo. Saim Dadodo currently runs Radio Voice of Sindh. Radio Voice of Sindh is very, very informative program radio, which is continuous 24 hours online, streamline, and very informative. Personally, I think if you don't have any contact with Sindh at all, with any information resources, but if you listen only Radio of Sindh, you can get immense information, and you will be connected with cultural music, cultural reports, and Radio Voice of Sindh gives us reports which other media in Sindh, they are not allowed. So I think we are very lucky to have Saim Dadodo here, and I look at Saim Dadodo to share his experience. Thank you. Thank you very much. Surya mare sob khe ta dil ja waham visar. Surya mare sob khe ta dil ja waham visar. Han bhala vid bhakre आडी ढाल मढार मथा तेग तरार मार तमतारो थे. वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जा साथियों, मुझा भाइरो, मुझू भेनरूं, ख़ुसूसन असांजी भेण इरशाद अब्बासी, जेका असांजे मोहसिन असांखे सिंध जी क़ौमी जदोजहद में शामिल कंदड़ ऐं रहनुमाई कंदड़ साईं काज़ी फैज़ मोहम्मद साईं जी न्याणी जेका हिते मौजूदु आहे, इहो असां सभिनी जे लाइ हिकिड़ो एज़ाज़ आहे जो अदी असां सां अॼु गॾु आहे. रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन जो सफ़र
या वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी जदोजहद या सिंध में या दुनिया में जिते बि सिंध जा घण घुरा रहनि था, सिंध सां प्यार कंदड़ सिंध जा आशिक़ रहनि था, उन्हनि सभिनी जे ज़हन में हिकिड़ी शइ गॾियल वेठल आहे त सिंध असांजी माउ आहे, सिंध धरतीअ जी ख़ुशहाली, सिंध धरतीअ जो आजपो ऐं सिंध जेका अॼु तकलीफ़ुनि में आहे उन जी निजात असां सभिनी जो पर्पज़ ऐं मक़सदु साॻियो ई आहे। रस्ता खणी मुख़्तलिफ़ हुजनि पर बुनियादी जेका थीम आहे, जेको असांजो गोल आहे, उहो इहो ई आहे त सिंध जा जेके वसीला जेके असां खां फुरिया विया आहिनि, जिन खां सिंधी माण्हुनि खे महरूम कयो वियो आहे, उन्हनि जी हासिलात लाइ असां गॾियल जदोजहद कयूं। हक़ीक़त इहा आहे त हर दौर में हर शइ जी हिकिड़ी अहमियत थिए थी। 79 में मूं जॾहिं अवामी आवाज़ जारी कई हुई त उन जो बैकग्राउंड बि इहो हो त उन ई वक़्तु हिकिड़ी सरकारी अख़बार हिलाल पाकिस्तान हुई ऐं ॿी इबरत अख़बार हुई। असां 1969 खां जेका सियासी जदोजहद या क़ौमी जदोजहद में जेके जेल भोॻिया, 1 यूनिट जे हवाले सां रूपोशियूं ॾिठियूं या जेका जदोजहद कई, ॿी त प्रेस ठहियो पर सिंधी प्रेस में जेको रेस्पॉन्स मिलंदो हो, हिकिड़ो दफ़ो काज़ी फैज़ मोहम्मद जेकबाबाद आयो, उन जे जलसे में उन वक़्तु 71-72 जी ॻाल्हि आहे त 20,000 जेकॾहिं माण्हू गॾु थियनि त तमामु वॾो जलसो आहे। ऐं इबरत जे अंदरे पेज ते सिंगल कालम में जेकॾहिं ख़बर हले त उन शइ खे हिकिड़ो मद्देनज़र रखी करे इहा ज़रूरत महसूसु थी त का अहिड़ी अख़बार, को अहिड़ी मीडिया जेका सिंधी माण्हुनि जी ॻाल्हि करे ऐं सिंधी माण्हुनि जी ॻाल्हि मथियनि ऐवाननि ताईं पहुचाए ऐं सिंधी माण्हुनि में एको मोहबत यकजहती ऐं सिंध जे मुतलिक़ का ॻाल्हि करे सघे। अवामी आवाज़ बि उन दौर जी हिकिड़ी ऐजाद हुई। उन दौर में अवामी आवाज़ जेको कमु करे ॾेखारियो, उन खां पोइ ॿियूं अख़बारूं आयूं, काविश आई, ॿियूं अख़बारूं आयूं, जिन जो जियापो पंहिंजी जाइ ते माण्हुनि खे महसूसु थियो त सिंधी अख़बारूं कढी सघजनि थियूं ऐं उहे ज़िंदा बि रही सघनि थियूं। हिन वक़्तु बि सिंध में जेका सूरत हाल आहे, सिंध जा वसीला, सिंध जा अख़्तियार जंहिं तरीक़े सां फॿाया विया आहिनि, जिन में मुख़्तलिफ़ जेके सियासी धुरियूं आहिनि उन्हनि सां मिली करे जेको कुझु उते थिए पियो, मां नथो सम्झां त मां उन जी का तफ़सीली वज़ाहत कयां। तव्हां सभई सिंध सां जुड़ियल आहियो ऐं तव्हां सभई सिंध खे बहितर सम्झो था त उन सॼी सूरत हाल खां निकिरण जे लाइ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस या सिंध जे आजपे लाइ, सिंध जे हक़नि जे लाइ जेके जेके तनज़ीमूं कमु कनि थियूं उहे जस लहणियूं। पर ॻाल्हि इहा आहे त सिंध में जेका मीडिया आहे, आया उहा वाक़ई इन्हनि सभिनीनि शयुनि जी तर्जुमान आहे? इहो हिकिड़ो सुवालु आहे। इन सवाल जो जवाबु रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन आहे। जेकॾहिं ज़ुल्फ़काराबाद या सीपेक इन हवाले सां जेकॾहिं को कराची में वॾो इज्तिमा थिए थो या वॾो एहतजाज हैदराबाद में थिए थो, हिकिड़े चैनल ते सिर्फ़ु अधु मिंट जी ख़बर हले, कंहिं अख़बार में पूरी सारी ख़बर हले, छा इहो काफ़ी आहे? इहो काफ़ी न आहे। अॼु सिंध में जीअं सिंध जा सचा आशिक़, सिंध जा सपूत जंहिं तरीक़े सां मारिया वञनि था, नाहक मारिया वञनि था, उन्हनि खे जबरन खंयो वञे थो, उन्हनि खे मारे, उन्हनि खे रोडनि ते उछलियो वञे थो। हुकूमतूं त उन्हनि खां लातालुक़ आहिनि, पर प्रेस जो बि जेको किरदारु आहे उहो इहो न आहे त उन्हनि जी का पोइवारी थियणु खपे, उन ते को एहतजाज थियणु खपे, उन ते के एडिटोरियल्स अचणु खपनि। त अॼु जेका रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन जेको गुज़िरियल 4 सालनि खां
12 खां वठी जेको सफ़र पंहिंजो शुरू कयो आहे इन शइ जी बाक़ाइदे खुली तरह निशानदेही कई आहे। जिते बि एहतजाज थिए थो उन एहतजाज जी मुकमल रिपोर्टिंग थिए थी। जिते कंहिं सिंध जे ॾाहे जी कंहिं सिंध जे अदीब जी वरसी जनम ॾींहुं मल्हाइजे थो उन जी पूरी रिपोर्ट ॾिनी वञे थी। ऐं सिंध जा जेके घण घुरा हुया उन्हनि जा किताब उन्हनि जी पढ़ाई कई वञे थी। ऐं सिंध जा जेके ॾाहा आहिनि हिन वक़्तु इल्मु अदब सियासत क़ौमी वसीला उन्हनि जा इंटरव्यू उन्हनि जा लेक्चर हलनि था। त रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन उहो आवाज़ु आहे जंहिंजी ज़रूरत इन जे करे महसूसु थी त सिंध में छाकाणि त उते हर कंहिं जा पंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि, हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत आहे। तंहिंजे करे असां जेको सफ़र शुरू कयो आहे असां उन ते पंहिंजे हौसले पंहिंजी हिमत तव्हां सभिनी जे ताउन सां असां उहो पंहिंजो सफ़र जारी रखंदासूं। असांजी इहा तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त हीउ जेको रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जो सफ़र आहे तव्हां उन में असां सां शरीक थियो। तव्हां कीअं उन में सपोर्ट करे सघो था, तव्हां इल्मी अदबी साइड ते असांखे सपोर्ट करे सघो था, तव्हां उन जी माली मदद करे सघो था। इदारनि खे जेकॾहिं सिंध जा सचा माण्हू ओन न कंदा ओसि ताईं इदारा ईअं ई हलंदा रहंदा जीअं असां पंहिंजे विताहिर हलूं था। छाकाणि त मां 51 साल पंहिंजी धरती खे ॾिना आहिनि। मां जॾहिं 21 सालनि जो थियुसि कॉलेज आयुसि त 1 यूनिट जे हवाले सां तहरीक हली, सिंधी में लिस्टुनि वारी तहरीक हली, बुख हड़ताल ते वेठुसि, सखर जेल में बांदी बणाए वियुसि। हाणे उहो 70 वारो सफ़र ऐं अॼु वारो सफ़र कंटिन्यू आहे। इन ई जज़्बे सां इन ई तरीक़े सां आहे त सिंध अज़ल खां रही आहे क़ाइमु, सिंध अज़ल ताईं क़ाइमु रहंदी। पर सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त उन में असांजो कहिड़ो किरदारु रहे थो। असांखे पंहिंजो किरदारु सोचणो पवंदो। तंहिंजे करे हीउ वाहिद उहो प्लेटफॉर्म आहे जंहिं ते अचो त सभु गॾिजी करे इन खे मज़बूत बणायूं। तव्हां इन खे हलायो सभु गॾिजी, छाकाणि त हीउ क़ौमी मिल्कियत आहे, क़ौमी असासो आहे। को कमर्शियल को प्रोजेक्ट कोन्हे त को असांखे इश्तिहार मिलनि था, ॿियूं शयूं मिलनि थियूं, असांखे धमकियूं मिलनि थियूं। पर जेकॾहिं ॿी सॼी संगत बि असांजो साथ न ॾे, असां अकेला हुजऊं त असांजो इहो सफ़र कीअं बहितर हलंदो। तंहिंजे करे मां सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त मां पंहिंजे विताहर सताहर कमु कयां थो ऐं कंदो रहंदुसि। अचो गॾिजी इन खे असां इंटरनेट टीवी चैनल करे हलायूं, असां इन खे प्रॉपर टीवी करे हलायूं जंहिंमें अंग्रेज़ी बि हुजे, सिंधी बि हुजे। अंग्रेज़ी इन जे करे हुजे त असां दुनिया खे ॿुधायूं त सिंध सां छा वहे वापरे पियो। हिन वक़्त ताईं जिन दोस्तनि रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां माली सहकार कयो आहे उहे तमामु घटि दोस्त आहिनि, तमामु थोरी तादाद आहे। पर वरी बि मां उन्हनि जो थोराइतो आहियां जिन असांजे हिन सफ़र में असांजो साथ ॾिनो। ऐं मां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे दोस्तनि जो थोराइतो आहियां जिन मूंखे एतिरो टाइम ॾिनो। असांजो इहो यकीन आहे, इहो ईमान आहे त सिंध हिकु ॾींहुं आजपू माणींदी, सिंध हिकु ॾींहुं ख़ुशहाल थींदी ऐं सिंध दुनिया जी तरक़ी याफ़्ता क़ौमुनि जी सिफ़ में हमेशह क़ाइमु ऐं दाइमु रहंदी। इहो ई जज़्बो आहे जंहिं जे तहत असां विढ़ूं पिया। वॾी महिरबानी, सदाईं। Thank you very much, Saimdad. Saimdad Odo gave very detailed description of his struggle, personal struggle since last 3-4 decades. And also he mentioned about the role of media, that whatever media we've got, so-called national media, is it representative of us? Is it representing Sindhi nation at the level which needs to be? And answer is no. And that's why was the reason of starting Awami Awas. And not only there, but when he came here, he started Radio Voice of Sindh, because he believes that other media, Radio Voice of Sindh is the platform which can represent Sindhi nation and show the real picture, and the other which other media is not able to present.
Sai Imdad Odo also mentioned about blunder and disappropriations, imprisonment, and exploitation of resources of Sindh. And he said, only way forward is to work together, and no one on his own can do. And he thanked the Sindhi people who are contributing towards the cause. But again, it's very meager. So we need hands to strengthen radio voice of Sindh and represent us at international level. Thank you much, Sain. Thank you. Coming back to my next speaker. My next speaker is Ms. Sadaf Solangi. Ms. Sadaf Solangi is a women rights activist and currently the capacity building program lead for International Sindhi Women Organization. And she's biomedical sciences graduate and professional clinical massage therapist. And she has been previous information secretary and women resources center coordinator. And she belongs to Sindh. We welcome her and ask her to present her experiences and about ISW. Thank you much. Thank you. Okay. So my name is Sadaf Solangi and I'm the lead for capacity building in the International Sindhi Women Organization. And I'm going to tell you a bit about our mission statement. We endeavor to empower Sindhi women through capacity building and leadership. And ISO develops capacity and skills of our members and helps socially and economically disadvantaged community of Sindhi women in the UK and internationally. ISO promotes human rights of Sindhi women. And we provide relief by giving financial help to women suffering of disaster. And we create awareness about Sindhi culture. So as we know, tanki khabara ke Sindh jeko a sabne khan richest province are, but we are deprived. So because I'm representing ISWO, I'm going to talk about gender discrimination in connection with the resources of Sindh. So Sindh is the richest province of Pakistan with resources of oil, gas, and coal, and the Indus River. And the total revenue of oil, I'm going to give you my number there. Statistics of 2014 budhaye to the estimated value of oil produced in Sindh at the rate of $100 per barrel, yo joko 113 billion rupees per year. But tadhe bhi asanjo halat sahi na hai. The 2012 petroleum policy mein je mutabik ke 50% of royalty jeko a who उन districts के डिबो जिथे oil produced होते हैं infrastructure development चला है पर एड़ो को mechanism ना है कि ही जो को तालुकाज़ आहिन districts आहिन इनन के यो फ़ायदो मिले ऐं जो को human development जो को आ हुनमें जो को major oil and gas producing districts आहिन उनन में ॾाढो poor state of human development आहे. The Badin Jekwa, major oil producing district, number 60 out of 91 districts in the whole of Pakistan, hikre human development report ke mutabik. Also among the 23 districts of Sindh, hinan je bawjood ke oil production aahe, Badin jo low rankings ain hinan mukhtalif shayn mein literacy rate, immunized children, women receiving antenatal care, improved drinking water facility. The jako major oil and gas producing areas Sindh jain unan mein aaye Badin ji mata ke budhayo Nara taluka in Khairpur Salepat in Sakhar. Badin ain tha rich taluka zain but jako women ain safa deprived ain malnourishment and lack of clean water hinan je kare premature children paida bethen. Sindh jeko second most populous province Pakistan mein and sub rural areas gothan mein manu ain jeko hikro survey thyo jeme hemorrhage is the leading cause of maternal mortality ain pregnant women jo bhi illnesses ain jeko childbirth ke affect thyu kan the obstetric health ke rural area mein dado kharaba ain premature babies malnourishment je kare guzare tha wanan. We are not a poor country, but women are suffering and denied basic needs. There are health inequalities, no jobs, education, no lack of education, and poor housing and bad health. तो जो को पानी जो को resource
हुते क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पूरे सिंध लाइ अवेलेबल न आहे ऐं जेको वाटर आहे थर डेज़र्ट में एक्सेस न आहे ड्रिंकिंग वाटर लाइ ऐं जेको औरतुनि जो विमेन जो जेको किरदारु आहे रोल आहे उहो आहे की हू पाणी खणी फेच कनि फैमिली लाइ पाणी खणणु वेंदियूं आहिनि ऐं इलाही जर्नी कंदियूं आहिनि इलाही मुश्किलात हूंदियूं आहिनि त ही जेको मर्द ज़ात आहिनि उहो हेल्प नथा कनि मदद नथा कनि ऐं पोइ जेको कम्यूनिटी वर्कर्स आहिनि दे हैव नॉट असेस द डिफिकल्टीज़ दैट दीज़ वुमेन आर फेसिंग इन कैरिंग द वाटर क्लीन आहे ऐं जेके कंटेनर्स आहिनि घर में त मर्दनि खे वधीक हुन ते हक़ु हूंदो आहे पाणी ते जेको किसान औरतूं आहिनि पेज़ेंट वुमेन हू तमामु घणियूं लॉन्ग आवर्स वर्क थियूं कनि तमामु ख़राबु कंडीशन में देयर इज़ नो मिनिमम वेज एंड जेको मेल पेज़ेंट्स आहिनि किसान हारी उन्हनि खां वर्स सिचुएशन आहे ऐं इलाही उन्हनि घरनि जूं बि इलाही कमु हूंदो आहे त दीज़ वुमेन इन्हनि खे लैंड जेको आहे जेको ज़मीन आहे हू ख़रीदे नथियूं सघनि विकिणे नथियूं सघनि ऐं अहिड़ियूं को रिसोर्सिस उन वटि न आहिनि एंड ड्यूरिंग लेजिस्लेशन पॉलिसी मेकिंग विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज़ इग्नोर्ड जेको एम्प्लॉयमेंट जो जेको रिसोर्स आहे ऑयल एंड गैस फील्ड जेको रिमोट अंडर डेवलप्ड एरियाज़ डेज़र्ट इन द हिल या हिली ट्रैक्स वेस्ट ऑफ सिंध में फील्ड इहो प्रोडक्शन आहे ऐं कंपनीज़ जो हेड ऑफिस कराची इस्लामाबाद में आहे त जेको कंपनीज़ चवंदियूं आहिनि त सिंधीज़ इनफ क्वालिफाइड न आहिनि रूरल सिंध में ऐं जेको विमेन ग्रेजुएट्स आहिनि इन्हनि डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हनि खे अपॉर्चुनिटीज़ नथियूं मिलनि हिन कंपनीज़ में कमु करण लाइ ऐं जेको एजुकेटेड वुमेन खे जॉब्स न आहिनि The companies have the money to build capacity of unskilled and semi-skilled local recruited people, but these jobs, ये जो jobs आहिनि outside जो शहरनि जी औरतुनि खे मिलनि था ये jobs ऐं जेको waiters, cooks, cleaners आहिनि उहे बि ॻोठनि खां नथियूं औरतुनि ॻोठनि जी औरतुनि खे ये jobs नथियूं मिलनि The gender role, English में हाणे ॿुधायां थी the traditional gender roles in Sindh define the women's place in the home, not in the workplace. And the society invests less in women than men. Female literacy is 29% compared to the male at 55%. In legislative bodies, women constitute less than 3% of legislature elected on the general seats. Women empowerment of women crucial factor for the eradication of poverty. To conclude, women's poverty is related to the absence of economic opportunities, lack of access to economic resources, including credit, land ownership, lack of access to education, and minimal participation in decision-making processes. So we need to bring equality in the resources distribution. Women are the foundation of our society. Let us empower them together here. Let's come together and help them overcome discrimination in resources. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Adi Sadaf, thank you very much. Ibrahim Munshi has written a very long poem. I don't have time, otherwise I would have loved. And he really represents that situation which Adi Sadaf has explained. I just read few lines from that one. मोरन मलूकन खे मरंदे ॾिसां थो मां कंगन कांगन खे कन्हरे ॾिसां थो मां धारियुनि खे धरतीअ खां धुॾंदे ॾिसां थो मां ॿेड़ीअ खां मंझि ॿार ॿधंदे ॾिसां थो सड़ां थो कढ़ां थो तॾहिं कुझु लिखां थो मां पंहिंजे ई ॼाण जो ॼार आहियां मां गदार आहियां मां गदार आहियां मां जीअरे जवानियूं कई जलंदे ॾिसां थो मां रज़ाक जो रूह रड़ंदे ॾिसां थो मां कूंदर कुला कुहनि जा कढ़ंदे ॾिसां थो सॼी सिंध सूरनि में सड़ंदे ॾिसां थो ॿरां थो मरां थो तॾहिं कुझु लिखां थो गुनहगार आहियां गिरफ़्तार आहियां मां गदार आहियां मां गदार आहियां महिरबानी थी सघां My next speaker is Abdul Sattar Sumro. Abdul Sattar Sumro is Vice Chairman of Sindhi Sangat United Kingdom, very active platform in the United Kingdom, and Sattar Sumro has been very active on organizing Sindhi community throughout the UK, and floor is to Abdul Sattar Sumro. महिमाननि खे जीएसन सिंधी संगत यूके गुज़िरियल 10-12 सालनि खां जिन असांजे सीनियर दोस्तनि वजूद में आंदी हुई एक्टिवली कमु करे थी स्पेशली जेका
UK में जेका सिंधी कम्यूनिटी आहे उनखे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म मुहैया करे थी। सिंधी संगत UK नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस कल्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेका ख़ुसूसी तौर ते सिंधी ॿोली जी बचाव ऐं सिंधी कल्चर जी वाधवीज लाइ ऐं सिंधी फैमिलीज़ खे हिकिड़ो सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करण लाइ कमु करे थी। सिंधी संगत UK साल में तक़रीबन 3-4 प्रोग्राम्स स्पेशली जेका नॉर्थ में शेफील्ड, मैनचेस्टर ऐं ब्रैडफोर्ड, प्रिस्टन में अरेंज करे थी। ऐं सिंधी संगत UK वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, IS इंटरनेशनल सिंधी वुमेन एसोसिएशन वारनि सां गॾिजी कमु करे थी ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जी बि सहकारी रही आहे। असांजो हिकिड़ो तालुक़ु आहे जेको आहे सिंधी हुजण जे करे जिन जो असांजो पंहिंजी धरती सां हिकिड़ो तालुक़ु आहे। सिंध जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उहा तारीख़ जे हिकिड़े ॾुखे दौर मां गुज़री रही आहे। हिकिड़ो सिस्टमिक वे में जेको सो सिंधी ॿोली, सिंधी कल्चर, सिंध जी तइलीम, सिंध जे जाग्राफ़ी जेके हदूं आहिनि उनखे ख़तमु करण जी कोशिशि कई वञे थी पई। सिंध जा जेके वसीला आहिनि उन ते जेको सो कब्ज़ो करण जी कोशिशि कई वञे थी। सो कई इशूज़ आहिनि सिंध लाइ, उन जी लैंड ग्रैबिंग थिए थी। वॾा वॾा प्रोजेक्ट्स जेके अॼुकल्ह लॉन्च कया विया आहिनि जंहिंमें ज़ुल्फ़कार आबाद आहे, जेको हिन जो ॿिया प्रोजेक्ट्स आहिनि, बैरिया टाउन आहे, उते इहो ख़दशो आहे त फ्यूचर में बि जेको सो धारी आबादी तमामु घणी अची वञे, असां सिंधी माण्हू अक़लियत में तब्दील थी वञनि, या सिंधी ज़मीनूं जेके आहिनि उहे बि जिन ते पहिरियों हक़ु उते जे मक़ामी माण्हुनि जो आहे, सिंधियुनि जो आहे, उनखे कब्ज़ो करण जी कोशिशि थी रही आहे। सिंध जो जेको मैदनियात आहिनि, गैस आहे, तेल आहे, उन जी बि जेको सो फुल थी रही आहे। उते सिंधी माण्हुनि खे रोज़गार नथो ॾिनो वञे, जीअं अदी सदफ़ तफ़सीली बयानु कयो। उनखां पोइ वॾो इशू सिंध में जेको सो एक्सट्रीमिज़म आहे, जेको मज़हबी मतभेद आहे, उनखे जेको सो हवा ॾिनी वई आहे, जीअं सिंधी माण्हू पंहिंजनि बुनियादी हक़नि तां उन जो ध्यानु हटाए ऐं उन्हनि खे जेको सो ख़ासि करे जेके अक़लियतूं आहिनि उन्हनि खे जेको सो उन्हनि सां ज़ुल्म कयो वञे थो। ऐं सिंध जा जेके पॉलिटिकल वर्कर्स आहिनि या जेके सहाफ़ी आहिनि, या उन्हनि खे जेको सो अगवा करे उन्हनि जो क़तलु कयो वञे थो। ऐं सिंधी ॿोली ऐं सिंधी सकाफ़त सां जेको सो माटेलो माओ वारो सलूक कयो वञे थो। सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली तस्लीम नथो कयो वञे। सिंध जे तइलीमी इदारनि में रिसेंटली सिंध जे कल्चर ते जेका असां बंदिश विधी वई, तव्हां अजरक पाए न अचो, टोपी पाए न अचो। सो सिस्टमेटिकली सिंधी माण्हुनि खे जेको केतिरी जीअं काफ़ी ज़ुल्म थी रहियो आहे। इवन सिंध जी जेका लीडरशिप आहे, जेकॾहिं तव्हां नोट कयो, उहा कहिड़े बि मकतब फ़िक्र जी हुजे, उहा चाहे शहीद नज़ीर अब्बासी हुजे, उनखे टार्चर करे शहीद कयो वञे थो। इवन सिंध जा जेके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुआ, ज़ुल्फ़कार भुट्टे जी जेका असां जुडिशनल किलिंग कई वञे थी, ऐं उनखां पोइ बेनज़ीर भुट्टो खे जेको सो पिंडी में रस्तनि ते शहीद कयो वञे थो। उनखां पोइ सिंध जे शहीद बशीर ख़ान कुरैशी खे ज़हर ॾेई उनखे शहीद कयो वञे थो, ऐं उनजे भाउ मक़सूद कुरैशी खे जेको सो गाॾी में जेको सो साड़े इंतिहाई बेरहमाना तरीक़े सां शहीद कयो वञे थो। शहीद मुज़फ़र भुट्टो हिकिड़ी डिघी लिस्ट आहे सिंध जे उन्हनि क़ौमी कारकुननि जी, बाशऊर माण्हुनि जी, जिन सिंध जे हवाले सां पंहिंजो वक़्तु, पंहिंजूं जवानियूं, पंहिंजी पूरी ज़िंदगी उन्हनि किन पंहिंजी जान जूं क़ुर्बानी ॾिनियूं, किन जेल काटिया, किन ज़िया जे पूरी मार्शल लॉ जे दौर में जेको सो अकूबत खाने जूं अज़ियतूं सठियूं। हींअर ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे मुख़्तलिफ़ चाहे असांजा कहिड़ा बि मकतब फ़िक्र हुजनि, कहिड़ो बि असांजो हुजे, हिकु नुक़्ते ते गॾु थियूं, उहा आहे सिंध ऐं सिंधी माण्हुनि जे जियापे ऐं सिंधी माण्हुनि जी जेका ख़ुदि इख़्तियारी आहे, उन मक़सद लाइ गॾु थियूं। उन लाइ सिंधी संगत हमेशह जेके बि सिंध जूं UK में जेके सिंधी डायस्पोरा जूं तंज़ीमूं आहिनि कमु कनि थियूं,
उन्हनि सां गॾु आहे ऐं गॾु रहंदी। नऊं पाप नगर, हिन पाप नगर जी ॻाल्हि न कर, तो चरबट नगरी नाहे ॿुधी जिते ॾाढो थींदो गाबो आहे। हिन शहर जो राजा राजधणी चरबट जो बि बाबो आहे। ही कूक सने वार खां खंजर खां तिखी आहे, ही फूक थधी हीर खां ओथर खां तिखी आहे। वहमनि जे मक़ामनि में सुती पई आहे मगर जे, ही क़ौम उथी पई त पोइ मैशर खां तिखी आहे। थैंक यू। Thank you, Abdul Subro. Thank you. My next speaker is Adi Deepa Wadhwani. Deepa Wadhwani is writer and community worker in Ahmedabad, Gujarat, India. She is chairperson and member committee of Sindhi Panchayat, Elsbridge, Ahmedabad. She is also ex-president of Gujarat Women's Bharatiya Sindhu Sabha, co-convener of Senior Citizen Wing, Sindhu Bhavan, member committee of Sindhu Saraiki Samaj, and member committee of Rang Karam Theatre in Ahmedabad. She has authored a book which is also available on our desk, registration desk. It's titled Sindhi Ritu, Rawaj and Rasmo. So I give mic to Adi Deepa to express her thoughts. Thank you. Thank you, Ella. आदरणीय मंच ऐं साम्हूं वेठल पूरी संगत, अलॻि अलॻि शहरनि मां आयल, अलॻि अलॻि मुल्कनि मां आयल, मां तव्हां सभिनी जो आजियां थी कयां जो मुंहिंजो बेबू यूके में रहंदो आहे, त तव्हां अॼु उते होस्ट आहियो ऐं असां इंडिया में आहियूं त तव्हां उतां जा बि होस्ट आहियो। त मूंखे अॼु तव्हांखे चवंदे ॾाढी ख़ुशी थिए त तव्हां असांजा महिमान थी आया आहियो। मूंखे चयो वियो आहे सिंधी ॾिण वार या ज़ालुनि जी कहिड़ी पोज़ीशन आहे इंडिया में। हाणे मुंहिंजो जनमु त पाकिस्तान में न हो, इंडिया में ई आहे, पर वॾनि खां जेके ॻाल्हियूं ॿुधंदा हुआसीं त उते जॾहिं असांजा वॾा रहंदा हुआ त तॾहिं त उहे चवंदा भई असां ॾाढा ख़ुशि हूंदा हुआसीं, असांखे सभु गायूं मेयूं वॾा बंगला माड़ा सभु हूंदा हुआ, खाधे पीते जी काई कमी न हूंदी। मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजा पप्पा ॻाल्हियूं कंदा हुआ त उन मां त मूंखे ई लॻंदो आहे भई असां जॾहिं सिंध में असांजा वॾा हुआ त ॾाढा ख़ुशि हुआ। पर जॾहिं उन्हनि खे मजबूरीअ में छॾिणो पियो सिंध, त छो छॾिणो पियो? पंहिंजी ॿोली ऐं सभ्यता बचाइण लाइ। त हाणे मां उन जे प्लेटफॉर्म ते ई मां इंडिया में अहमदाबाद में कमु कंदी आहियां। त जॾहिं असांजी ॿोली ऐं सभ्यता न बचंदी त असांजी पोइ सभु असां जेके थोरा घणा माइनॉरिटी में सिंधी आहियूं उहे वेंदा, ॿारनि खां विसरी वेंदी, पोइ सिंधी गुम थी वेंदी। त मां उन सोचे करे ई मां उते अहमदाबाद में हेतिरी सभु संस्थाउनि सां जुड़ियल आहियां ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो इहो मोटो हूंदो आहे, इहो हिकिड़ो मक़सदु आहे त असां जे हूंदे असां पूरी कोशिशि कयूं त पंहिंजी ॿोली सभ्यता बचायूं, जंहिंजे करे इहो आया। असांखे माड़िया गायूं मेयूं जेके घोड़ा हुआ उते कार जे बदिरां, उहे त उते बि हुआ, त हिते असां उहे वरितासीं त छा उहे त उते बि हुआ, छॾे छो आया वॾा? त असांखे उहो वॾनि जो वारसो ॿारनि खे ॾियणो आहे। माना असांजी डबल जवाबदारी आहे त असां वॾनि जो वारसो ॿारनि खे ॾियूं ऐं असां ॿारनि खे उन डायरेक्शन में वठी वञूं त जीअं हुननि खे पंहिंजे कल्चर जी ख़बर पवे। अॼु ॾिसो टीवीअ ते न्यूज़ पंहिंजे एडवर्टाइज़ ईंदी आहे, ॿार आई 5 साल जो, हिकु दफ़ो ॾिसंदो कैडबरी न्यूज़, ॿियो दफ़ो ॾिसंदो, टियों दफ़ो ॾिसंदो, त हुनखे यादि पइजी वेंदी आहे भई हाणे इहे कैडबरी आहिनि, स्लोगन बि यादि पवंदो आहे ॿारनि खे। त मुंहिंजी उन डायरेक्शन में पूरी कोशिशि आहे ऐं मां चाहींदसि त जीअं तव्हां बि एतिरी सॼे सिंध मां आया आहियो त ज़रूरु असांजी सिंधी क़ौम, सिंधी ॿोली, सिंधी क़ौम ज़िंदह रहंदी। छाकाणि किथे ईअं बि चयो वियो आहे, मां काफ़ी सभु इंडिया में सम्मेलन अटेंड कंदी आहियां, त जॾहिं हिकु मच्छर मरण जी दवा आहे, उहा मच्छर मरण जी दवा मच्छर कोन मोआइनि त सिंधी छो मरंदी? असांजी सिंधी असांजी कॾहिं न मरंदी। पर असांखे कोशिशि करणी असांजो फ़र्ज़ु आहे त जीअं अॻियां उहे ॿार बि ज़रूरु उन्हनि खे असरु पवंदो। असां ई विसारे छॾींदासीं, असां ई ॿारनि सां सिंधी न ॻाल्हाईंदासीं। त असांजे अहमदाबाद में बि हाणे इहा ई हालत आहे त जेके सिंधी स्कूल आहिनि त उहे बंदि थींदा था वञनि, पर असां हुते एतिरी कोशिशि कई आहे त भई जीअं सिंधी हिकिड़ो सब्जेक्ट रखिजे, भले इंग्लिश मीडियम ॿार पढ़नि, छाकाणि ॿारनि खे कॉम्पिटिशन जी दुनिया आहे, त असां उहा पूरी कोशिशि कई आहे त जीअं सिंधी असांजी लैंग्वेज बचाइण लाइ। ॿियो असांजो हुते स्टेप आहे इंडिया में त दिल्लीअ मां सेंट्रल मां असांखे सिंधी लैंग्वेज लाइ ऐं हर साल काफ़ी कुझु मदद मिलंदी आहे, माली मदद, जंहिंजो नालो आहे NCPSL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज।
त उन कनेक्शन में असां ईअं उनजी ईअं आहे भई तव्हां पंहिंजी लैंग्वेज कहिड़े बि प्रोग्रामनि सां कहिड़े बि किताब लिखी सम्मेलन करे ॿारनि खे पढ़ाए कुझु बि करे तव्हां सिंधी बचायो। त उन में उहा इहा जेका संस्था आहे NCPSL उन जे तरफ़ां असां उते सिंधी क्लासिस हलाईंदा आहियूं, जंहिंमें हिकु पासे अरबी सिंधी हिकु पासे देवनागरी। त असां उहो ॿारनि खे ईअं सोचींदा आहियूं भई ॿार जीअं कंप्यूटर सिखनि था, अॼु ॿार 5 साल जो ॿार उनखे असांखां सुठो मोबाइल हलाइणु ईंदो आहे। त असां इहा कोशिशि पूरी उते कई आहे त जीअं असां उन्हनि ॿारनि खे सिंधी सेखारियूं ऐं एटलीस्ट उन्हनि खे लिखणु पढ़णु ऐं ॻाल्हाइणु अची वञे। भले हू देवनागरीअ में पढ़ंदा, हिकु पासे अरबी सिंधी हूंदी आहे, अरबी पढ़ी सघनि था, जे न त देवनागरी पढ़ी सघनि था। त उहा असांजी पूरी उते कोशिशि आहे ऐं उन कोशिशि में काफ़ी सभु संस्थाऊं आहिनि ऐं उन में मेन संस्था आहे भारतीय सिंधु सभा, जेका असांजे पूरे इंडिया में पूरी मतिलबु वसियल आहे। ऐं मां अॼु चाहींदुसि त जॾहिं मूंखे एॾो सुठो प्लेटफॉर्म मिलियो आहे त मां चाहींदुसि त तव्हां बि उनजा NRI मेंबर थी वञो, त हिकु असांखे हिकु मॉरल सपोर्ट मिलंदो त भई हा भई हितां जा बि मेंबर NRI 2 ठहिया। त उहो मां तव्हांखे पोइ नेक्स्ट ॿुधाईंदुसि। ऐं हींअर मूंखे बाक़ी ॿियो टॉपिक आहे इहो त भई जॾहिं सिंधी लैंग्वेज असांखे बचाइणी आहे त उनजे पुठियां पाण खे कीअं बचाइजे, उनजो पहिरियों स्टेप आहे भई असांजा वार त्योहार ॾिण रीतियूं रस्मूं। अॼु ॿारु ॼमे थो, उनजी शादी आहे, तेसि ताईं इलाही हाणे जीअं ॿार अलॻि था रहनि या ॿार फॉरेन हली विया आहिनि, ॿाहिरि घर खां जॉइंट फैमिली में नथा रहनि, त मां उहा इन किताब जे थ्रू पूरी कोशिशि कई आहे जंहिंजो नालो आहे सिंधी ॾिण वार ऐं रीतियूं रस्मूं। त उन में ईअं आहे भई ॿारु ॼमे थो ऐं उनजी शादी, तेसि ताईं असां उनजा कहिड़ा सभु कंदा आहियूं, कहिड़ा साठ सुगुण कंदा आहियूं, उन में छा चवंदा आहियूं। अॼु नुंहर आहिनि ॿाहिरि थियूं रहनि, उनखे ख़बर कोन्हे त भई असां जेके बि असांजा सिंधी त्योहार आहिनि उन्हनि में छा चइबो आहे, असांखे उहो कीअं उन जो प्रोसीजर आहे, पूॼा महिल छा चइबो आहे। त मां इहो सभु डिटेल जेके आहिनि उहे मां उन किताब में लिखियूं आहिनि ऐं मां पूरी कोशिशि कई आहे त भई जीअं असांजो सिंधी लैंग्वेज ऐं उनजे पुठियां जेको उन सोर्स आहे रीतियूं रस्मूं ऐं ॾिण वार उनजे थ्रू बचनि। त मां त सभिनी खे रिक्वेस्ट कंदुसि, मां किताबु खणी आई आहियां, जंहिंखे दोस्त हू आर इंट्रस्टेड त प्लीज़ तव्हां काउंटर ते आहे कलेक्ट कजो। अच्छा, उनखां पोइ नेक्स्ट आहे भई लेडीज़ जी हालति इंडिया में छा आहे, मूंखे उहो चयो वियो। ऐं जेसि ताईं इंडिया जी ॻाल्हि आहे त इंडिया में त सुठी पोजीशन आहे, हिते मर्द हाणे कुलो कुले सां मिलाए करे लेडीज़ सां हलनि था। इन बारे में मुंहिंजो इहो आहे त इंडिया में लेडीज़ जे सिंधी आहिनि उन्हनि जी हालति तमामु सुठी आहे। हिकु मर्द जी कामयाबीअ जे पुठियां हिकु ज़ाल जो हथु हूंदो आहे, पोइ उहो कहिड़ी बि ज़ाल हुजे। तीअं मां बि एतिरो चवंदसि त मुंहिंजी कामयाबीअ जे पुठियां मुंहिंजे बि घोट जो, मुंहिंजे ॿारनि जो हथु आहे, जेके हींअर हिते हाज़िर आहिनि। त प्लीज़ तव्हां उथी बीहंदा। मुंहिंजा हिते हस्बैंड आहिनि मिस्टर वाधवानी, जिन जो मूंखे पूरो साथ आहे, तॾहिं मां हिते ताईं पहुची सघी आहियां। ऐं मुंहिंजा 2-3 ॿार आहिनि, हिकिड़ो बॉम्बे आहे विशाल, हिकिड़ी ऑक्सफोर्ड में बेबी आहे जेका हिते ई रहंदी आहे, ऐं हिकु मुंहिंजो बेबू आहे विकास, जंहिं मूंखे एतिरो पूरो इनकरेज कयो आहे। त मूंखे इहा पूरी ख़ुशी आहे त हर पुरुष जे पुठियां जेकॾहिं कामयाबी जे पुठियां लेडीज़ जो हूंदो आहे त हर लेडीज़ जे कामयाबी जे पुठियां बि पुरुष जो हथु हूंदो आहे। ऐं उहो आहे तॾहिं असां हीअ सभु कमु करे सघूं था, समाज जा, सभ्यता जा। ॾाढी महिरबानी मञींदसि भावना जी ऐं सिंधी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जी, जिन मूंखे मौक़ो ॾिनो। तव्हां मूंखे शांतीअ सां ॿुधो, उन लाइ वॾी वॾी महिरबानी। तव्हां प्लीज़ कॾहिं बि इंडिया हीअ जेका तव्हां इंटरनेशनल हिन भेरे रखी आहे कॉन्फ्रेंस, उहा प्लीज़ कॾहिं इंडिया में रखो। त किथे बि रखंदा तव्हां, मां तव्हां सां गॾु हूंदसि, त मां तव्हांखे पूरो साथ ॾींदसि। ऐं सिंधी क़ौम, सिंधी ॿोली बचाइण लाइ तव्हांखे कुझु बि हेल्प या कुझु बि मुंहिंजी सजेशन खपे त आई एम 24/7 हाज़िर। थैंक यू। Thank you very much, Adi Deepa Ratwani. Very inspirational, and I'm really amazed. Adi Bhavna Rajpal. I think most of you who are sitting there, they know Adi Bhavna Rajpal, and I don't have much time to introduce much about her, but just will tell few things about her. She's a gold medalist in English literature from University of Bombay and St. George's College, Bombay. She has done her master's in English literature from University of Leeds. Presently, she is pursuing her PhD, and you will be amazed how people connect with their language, their cultures. So she is pursuing her PhD on Sindhi cinemas. She curated the first ever Sindhi film festival recently in London, and which was people were participated from all over the world. This festival showed over 30 Sindhi films from India and Pakistan both.
So Adi Bhavna Rajpal is with us. Good afternoon. Yesterday afternoon, I was talking to a very dear friend of mine, for the lack of a better term. I asked him, so what do I speak tomorrow on? I'm going to this World Sindhi conference. And I quote, he said, talk about Sindhi films which talk about Sindhi country and longing for its own nation. Now the phrases that struck me in his reply were Sindhi country, Sindh country, sorry, not Sindhi, Sindh country and longing for its own nation. My PhD right now is on Sindhi cinema, and for me, I can't see borders, I can't see differences. I'm religion blind, I don't know what Hindu Muslim is. I consider myself to be a Sindhi Sufi woman, but when he says Sindh country, it shows that subconsciously there is some relation between the word Sindh and country. I know today we've gathered here. Okay, there are many teary-eyed people after what Deepa spoke about. Please stop crying, people. Have a handkerchief and don't get so emotional. Okay, so there is a relationship between the term Sindh and the landscape Sindh. For people who do not belong to Sindh, like us, I don't think we do not belong to Sindh, because I carry my Sindh with me in my heart, in my head, and that is Sindh for me. I think it's a very subjective term when we say Sindh. It's also an imaginative place for people like us, but there is a physical space that exists. I'd like to say thank you to Dr. Lakhu Luhano for he was our chairperson for the last 2 terms, for the 4 years, and we are so delighted to work with him. So just I'd like to say thank you, and if you can just give a big hand, I like. And the second thing, Dr. Rubina Sheikh, she's our chair, the executive committee was elected by the members, and then executive committee elect all those office bearers. So we elected Dr. Rubina Sheikh, and I'm so honored and delighted to share with you. She is a very first time chairwoman of any Sindhi organization. So we are so much thankful to you, and give a big hand for her. Thank you. So World Sindhi Congress has been working throughout the world, with different organizations, including Sindhi Sangat UK, Sindhi Association of UK, SANA, International Sindhi Women Organization, Sindhi Baloch Forum, GMSED, Memorial Committee, Liberation, Interfaith, WSI, Sindhi Foundation, UNPO, and there's a lot of other organizations. We have been working for the rights of the oppressed nations. So these are the recent activities, but I will go more in detail, I will talk about our last year's activities, and I'm so I'm delighted to again share with you that on Facebook we have more than 100,000 likes, and you can see we have almost 4,000 followers on Twitter, and we have all those presence on the social media, including Facebook, Twitter, Google, Instagram, and so on. And also we have been issuing the monthly e-newsletter. So I encourage all of you to please sign in e-newsletter, and you will see very quick, it's so quick, you can see brief about the activities we have been doing. So, and you can, if you log into our website, I don't have time to show you at this time, but if you go to our website, www.worldsindhicongress.org, you can see, you can for the Facebook and all other social media, and you can subscribe for the e-newsletter. It's so simple, even you can do it from your phone. So please do so, and support us. We have been celebrating Cultural Day since maybe last 5-6 years, and last year we celebrated in Calgary, London, Houston in December, and you can see there's a few snapshots. So that's the kind of either we celebrate ourselves or we celebrate with some other Sindhi organization, and we celebrate our culture, language, and we sing and dance.
We celebrated James's birthday anniversary last year in Houston, Toronto, and Sheffield. And that we have been celebrating since many years. We had a protest in Geneva on March this year. We organized. There was a protest with Baloch, Kashmiri, Saraiki, and Gilgit people in front of the UN Human Rights Headquarters in Geneva. We had a session in the Drivers for Peace and Democratization, National Minority Rights and Diaspora Action with UNPO in April this year in Stockholm, Sweden, where Laku Lohano represented WSC and shared his thoughts. So they and these are the activities. You can find this all information on our website. So you can say we've been supporting this school under the name of Sobo Gyan Chandani over there. And there's some in 2013-14 we have been representing Sindhi WC been representing in the United Nations on different sessions, and especially in the UNPO we have a lot of we have arranged demonstrations here in mostly in Canada, some in America, in Canada against the human rights violations and human rights violation in Sindh. And you can find us on these all social media. So please join us, help us, and thank you very much for your time and listening. Appreciate. So now we'll move to our next session. Hajan Kaloro, he is the moderator for the next session. So I will give mic to him. And thank you for listening again. Thank you, Asif. GSN. As he told you, I'm Hajan Kalodo. I'm Hajan Kalodo, organizer for WSC in Canada. I'll be your moderator for today's this second session of today's conference on advancement of Sindhi nation, land and natural resources, and environmental justice. I have quite a few of speeches here from the very learned people. I'll first request them to come onto the stage and take their seats. Alice Albania is author of Empires of Indus, the story of the river which won a Somerset Maugham Award, the Dolman Travel Prize, the Jerwood Royal Society of Literature Special Prize for Non-Fiction and Elite. She read English literature at Cambridge University and South Asian history at SOS. And in between lived for 2 years in Delhi, working as an editor and journalist with Indian newspapers and magazines. During this time, she had the idea to write 2 books, Empires of the Indus and her first book of fiction, Leela's Book, in 2011, which was recently shortlisted for the Authors Club Best First Novel Award. Miss Alice, over to you, please. In a land where it seldom rains, a river is as precious as gold. Water is potent. It trickles through human dreams, permeates lives, dictates agriculture, religion, and warfare. Ever since Homo sapiens first migrated out of Africa, the Indus has drawn thirsty conquerors to its banks. Some of the world's first cities were built here. India's earliest Sanskrit literature was written about the river. Islam's holy preachers wandered beside these waters. Pakistan is only the most recent, the Indus Valley's political avatars. I remember the first time I wanted to see the Indus as distinctly as if a match had been struck in a darkened room. I was 23 years old, sitting in the heat of my rooftop flat in Delhi, reading the Rig Veda and feeling the perspiration running down my back. It was April 2000, almost a year since the war between Pakistan and India over Kargil and Kashmir had ended, and the newspapers which the delivery man threw onto my terrace every morning still portrayed neighbouring Pakistan as a rogue state, governed by military cowboys, inhabited by murderous fundamentalists. The rhetoric had the patina of hysteria. But what was the troubled nation next door really like? As I scanned the 3,000-year-old hymns, half listening to the call to prayer, I read of the river praised by Sanskrit priests. The Indus they called unconquered Sindhu, river of rivers. Hinduism's motherland was not in India but in Pakistan.
its demonized neighbor. At the time, I was studying Indian history eclectically, omnivorously, and hastily, during bus journeys to work, at weekends, lying under the ceiling fan at night. Even so, it seemed that everywhere I turned, the Indus was present. Its merchants traded with Mesopotamia 5,000 years ago. A Persian emperor mapped it in the 6th century BC. The Buddha lived beside it during previous incarnations. Greek kings and Afghan sultans waded across it with their armies. The founder of Sikhism was enlightened while bathing in a tributary, and the British invaded it by gunboat, colonized it for 100 years, and then severed it from India. The Indus was part of Indians' lives until 1947. The very name of India comes from the river. The ancient Sanskrit speakers called the Indus Sindhu. The Persians changed the name to Hindu, and the Greeks dropped the H altogether. Chinese whispers created the Indus and its cognates, India, Hindu, Indies. From the time that Alexander the Great's historians wrote about the Indus Valley, spinning exotic tales of indomitable Indica, India and its river tantalized the Western imagination. Hundreds of years later, when India was divided, it might have been logical for the new Muslim state in the Indus Valley to take the name India, or even Hindustan, as the valley was called by an 18th century English sailor. But Muhammad Ali Jinnah rejected the colonial appellation and chose the pious neologism Pakistan, land of the pure, instead. He assumed that his co-equals in Delhi would do the same, calling their country by the ancient Sanskrit title Bharat. When they did not, Jinnah was reported to be furious. He felt that by continuing to use the British name, India had appropriated the past. Pakistan, by contrast, looked as if it had been sliced off and thrown out. During the 2 years that I lived in Delhi, I wondered about these things, the ironies, misnomers, and reverberations of history. But perhaps to my sun-baked imagination, it was the river itself that was the most enticing. I dreamt about that river, which begins in Tibet and ends near Karachi in the shimmer of the Arabian Sea. I tried to picture those waters, which emperors had built forts beside, which poets still sang of, the turbulent gold-bearing abode of snake goddesses. When at last I reached Pakistan, it was to map these layers of history and their impress on modern society. During the past 60, well, this book was published in 2008, I think, so it's almost 10 years ago. Maybe this is still true, you can fill me in. Pakistanis have been brutalized by the violence of military dictatorships, enraged or deceived by the state's manipulation of religion, and are now being terrorized by the West's war on terror. But Pakistan is more than the sum of its generals and jihadis. The Indus Valley has a continuous history of political, religious, and literary ferment, stretching back thousands of years, a history which Pakistanis share with Tibetans and Indians. The intertwining of those chronicles, memories, and myths, that is the inheritance of the people who live in the Indus Valley. This book recounts a journey along the Indus, upstream and back in time, from the sea to the source, from the moment that Pakistan first came into being in Karachi, to the time millions of years ago in Tibet, when the river itself was born. Along the way, the river has had more names than its people have had dictators. In Sindh, it is called Purali, meaning capricious, an apt description of a river which wanders freely across the land, creating cities and destroying them. Sindhis also know it as Samunda, ocean, a name evocative of the vastness of the river within their landscape and civilization. For Pashtuns on the frontier with Afghanistan, the Indus is simultaneously Nilab, blue water, Sher Darya, the Lion River, and Abbasin, father of rivers. Along its upper reaches, these names are repeated by people speaking different languages and practicing different religions. Baltis once called the Indus Gemtsu, the Great Flood, or Sufo, the Male River. Here, as in Ladakh and Tibet, it is known as Singhe Sampo, the Lion River. Today, in spite of the militarized borders that divide the river's people from each other, the ancient interconnectedness of the Indus still prevails. The river gave logic to my explorations. It lies at the heart of this book because it runs through the lives of its people like a charm. From the deserts of Sindh to the mountains of Tibet, the Indus is worshipped by peasants and honored by poets. More than priests or politicians, it is the Indus they revere. And yet it is a diminished river. The mighty Indus of Sanskrit hymns and colonial tracts was heavily dammed during the 20th century, beginning with Britain's profit-driven colonization of the lower Indus Valley and extending through 70 years of army-dominated rule in Pakistan.
Big dams have shackled the river, transforming the lives of human and non-human species on its banks and in its waters. Now, when I think of the Indus, I remember the eulogies of Sanskrit priests, Greek soldiers, and Sufi saints. Their words come down to us across the centuries, warning of all there is to lose. So it's really wonderful to be here because it's been a long time, and one of the best times of my life was when I was travelling in Sindh and researching this book, and I made so many friends and was treated so with such hospitality by the people I met in Sindh, and really I felt that Sindh went against the current of Pakistan. I was always being surprised in Sindh by things that were going on, by the things people said. It was, I think it was then a place that defied the norms that were being created by Pakistani society in many ways. And I don't know about... Thank you, Alice. As she mentioned earlier, in order for Sindhi nation to strive and progress, we have to deal with intense biases, as you observe with Shidis and other marginalized people and women. And also how lives of river people is affected who live in delta due to shortage of water. Thank you very much, Alice, for your great book and showing the real face of Sindh, which was lost somewhere under the name of Pakistan. Thank you very much. A great applause for her, please. Yeah, just one second. I would request Adi J. Lohana to come and present her the Ajrak. Please. Thank you. Now I would like to request Mr. Tom Deegan, Asian Affairs journalist from United Kingdom, to share his thoughts. My discourse is principally concerned with as Alice has just said, the purpose of the Pakistani state. She referred to it, what was its purpose? And I believe that its purpose was nothing more, nothing less than simply to divide what the West saw as a very, very powerful possible rival arising in the East. When the decision to ultimately grant independence to the Indian subcontinent was made, it occurred immediately after the Second World War, and it was overseen by Earl Mountbatten of Burma, who was given the commission of handling the independence handover by Clement Attlee's government, post-war government in Britain. Clement Attlee wanted a united India. Mountbatten persuaded him that Mr. Jinnah would start a civil war in India if he didn't get a separate state for Muslims. Mountbatten persuaded Attlee that that was the case. In reality, it was nonsense. Jinnah was not as influential with the Muslim population of India as a whole as Mountbatten was claiming. The decision to divide India was made by Winston Churchill and Harry Truman at the end of the Second World War, shortly after Churchill made his famous Iron Curtain speech. And their eye was on the Soviet Union. Everything, all of their foreign policies and their decisions after the Second World War were directed to A, starting the Cold War, and B, to making sure that India was not so close to the Soviet Union that it might be more heavily influenced. They were concerned that there were many, many socialists, communists, and left-wing people in the Quit India movement, and they wanted to make sure that India was therefore divided.
the two-nation theory didn't make any sense, simply because it left more Muslims, excuse me, it left more Muslims outside Pakistan than were incorporated into this new state. So just on that basis, it couldn't possibly have been a need for Muslims to have an independent state outside India, because the remainder of the population of the Muslim population of India outnumbered those inside Pakistan. The consequences of that have already been felt around the whole continent. The consequences of this unnecessary division, because the Pakistan state that came to exist, Jinnah had his ideals. He was quite probably sincere in his belief that the country could evolve into a representative democracy. But as we know from the history, the only thing the Pakistani people have actually gotten since independence predominantly is military dictatorship, one military dictatorship after another. And it is a military dictatorship that has proved itself to be extremely vicious whenever their interests are threatened. They are a very wealthy elite of Punjabi, mostly Punjabi military figures, who I understand from Geneva, from something I discovered in Geneva during the recent protests, that they are worth $30 billion between them, the Pakistani military. If you compare that with the Indian military, most of them have to go on book signing sessions around the world to try and supplement their meager Indian pensions. That alone indicates the nature of the Pakistani military setup. They are in effect little more than gangsters. And they are also vicious gangsters. Anybody who threatens their power, I don't have to tell you the activities of the ISI. They can murder people with impunity. They torture and murder people and dump them on the streets. And then if there is an outcry, if the family create any kind of difficulties or attempt to look for legal recourse, the ISI simply pay the family a few hundred or a few $1,000s. I relate all of this to those Sindhi nationalists who may well believe that you have a chance of seceding from Pakistan. That is what you would face. Look at the lessons that the Bengali people learned when they tried to oppose the Punjabi military elite. They will slaughter and murder as many people as they need to hang on to their power. So on that note, that is about all I have to say. I wish those people from Sindh and Balochistan who are looking for, if not independence, at least for some kind of reasonable representation and fair dealing in Pakistan among the states that, for the states that they would represent, I wish you well and I wish you luck. But I have to advise you that your chances of actually ever being able to force this military elite to give ground is remote. Only when the people of Pakistan unite against the military elite, only when they decide to get rid of the generals, perhaps the NCO element of the Pakistani army might well wake up. That happened once in Brazil about 50 or 60 years ago, when the NCOs overthrew the generals and colonels. That is possibly the only hope for the Pakistani people of being free from the military masters who control the country and who give aid and succor to these extremists who have become a menace to civilization. That's about my lot. Thank you very much. Thank you, Mr. Tom. Sheikh Ayaz चवा
जे हां न हारी कोई हारल ही ॾींहं बि घारे वेंदासीं छो पेर पसारे वेठो आं उथ डूंगर ॾारे वेंदासीं जे हां न हारी कोई हारल. Thank you. Now I would like to request the Irshad. Mrs. Abbasi is daughter of renowned Sindhi politician, Sufi and leader of Hari movement, Sai Qazi Faiz Mamand. She is living in New Jersey, USA. She is a human rights activist and supporter of Sindhi national movement. I will read a small poem in the honor of Sai Faiz. Faiz sajoi farhat मधर मधर ॼण माक हालाणी ॼाओ हुयो हरजा हुयसि हाक हारिन जो हॾ ॾोखी पोरियतनि जी पोशाक दर्दमंदीअ जो दरवाज़ो अड़ियनि जी औताक सिंध जा से उशाक अॼु न पसंदि अखड़ियूं. अदी इरशाद. हिते गॾु थियण जो असुलु मक़सदु इहो आहे त असां सभु अंदर में सड़िया विया त असांजे सिंध सां केतिरा ज़ुल्म केतिरियूं ज़्यादतियूं हमेशह हर दौर में थींदियूं रहियूं आहिनि त असां गॾिजी पाण में अहिड़ो लाइ अमल ठाहियूं त जीअं असां अॻिते हली कुझु पंहिंजे पुठियनि लाइ छॾियूं. न त जेको सॼो 70 सालनि जो दौरु गुज़रियो आहे सिंध खे हमेशह लुटियो वियो आहे. कुझु पंहिंजनि लुटियो आहे कुझु धारियनि लुटियो आहे. सिंध जा माल मिल्कियत वसीला सभु काग़ज़नि जे हथ में आहिनि. ज़ाहिरनि त ज़ुल्फ़कार आबाद आहे सीपेग आहे बहरिया आहे पर 70 सालनि खां असांखे उॾोईअ वांगुरु सभु खाईंदा था वञनि. तव्हां असांजे निसाब में ॾिसो हिस्ट्री ॾिसो सभु कूड़ ऐं ठगीअ ते ॿधल आहे. तव्हां इलेक्शन्स ॾिसो सभु कूड़ ऐं कंहिं चङे माण्हू खे कॾहिं बि इलेक्शन में न चढ़ंदा आहिनि. सिर्फ़ु ठगीअ जा वोट कातिलनि खे वोट मिलंदा आहिनि ठगनि खे वोट मिलंदा आहिनि. असां हर तरह सां मुसीबत में आहियूं. डोमिसाइल ॾिसो भई चवंदा आहिनि कोटा सिस्टम आहे बाबा सिंध जो डोमिसाइल ते वॾे सूबे जा माण्हू अची छा ब्यूरोक्रेसीअ में विया आहिनि आर्मीअ में विया आहिनि उहे पंहिंजूं सॼियूं सीटूं खणंदा आहिनि. जेको सिंध जो मेरिट वारो ॿारु आहे कॾहिं बि कोन ईंदो आहे. मतिलबु असां हर शइ में असांजूं ज़मीनूं असांजी एग्रीकल्चर लैंड जॾहिं सखर पे राज ठहियो त 500 एकड़ ज़मीन तॾहिं जे चीफ सेक्रेटरी रुईदार ख़ान खे पावर्स आहे त माण्हुनि में विरहाए. कॾहिं ईअं थियो आहे त 1 इंच ज़मीन पंजाब जी सरहद जी कंहिं सिंधीअ खे मिली हुजे. नौकिरियुनि में ॾिसो असांजा ॿार वीचारा कॉम्पीट कंदा आहिनि त बि कोन उन्हनि खे ॾींदा आहिनि जायूं. छाकाणि हुननि जो सॼो हिसाबु किताबु पंहिंजो ठहियलु आहे. हाणे मां कमु कयो आहे पोर्ट एंड शिपिंग विंग में KPT पोर्ट कासिम यस मुंहिंजे हुन ईंदा अंडर में. छा थींदो जो सिंधियुनि खे नौकिरियूं कोन ॾींदा मतिलबु नौकिरियूं न पोइ जेके हुननि जा ऑफिसर्स ईंदा उनखे 1000 एकड़ 1000 वाल क्लिफ्टन जे भरिसां बाथाइल आहिनि. हर ऑफिसर खे 3 साल जी नौकिरी खां मिलंदा. कोई सिंधी न खणंदा हुआ. 1000 वाल उन्हनि खे मिले. केॾी क़ीमती ज़मीन आहे मतिलबु हर शइ में. या पॉडकास्ट में बि हिकु केतिरो एकड़ ॾींदा हुआ सिर्फ़ु पंहिंजनि माण्हुनि खे ॾींदा हुआ सिंधियुनि खे न ॾींदा. ज़मीन में जॉब्स में पैसनि में हर शइ में असां सिंधियुनि खे हमेशह मुश्किलात मिली आहे. ॿोली आहे 72 जे एक्ट जे तहत ॿोली सभिनी स्कूलनि में मस्ट आहे पर कराची में हाणे कंहिं बि स्कूल में सिंधी नथी पढ़ाए. शायदि हुमेरा पढ़ी हुजे त उन ज़माने में सिंधीअ जो सब्जेक्ट हूंदो. हाणे त बिल्कुलु सिंधीअ खे ईअं करे विया आहिनि ॼण धारिया तव्हांखे कराचीअ में अफ़गानी मिलंदा बर्मीज़ मिलंदा दुनिया जो हर माण्हू मिलंदो. ऐं सिंधी वीचारा हमेशह मुसीबत में. जेके चंद सुठा सियासतदान आहे तिन खे त हिननि कॾहिं पुछियो बि न आहे. एजेंसीज़ असांजे पंहिंजे माण्हू असांजे पंहिंजे माण्हुनि जो ॾोह कोन्हे. हमेशह चवंदा आहिनि त भई सिंधियुनि में हाल कोन्हे. सिंधी पैसे में घटि सिंधियुनि वटि छा आहे. जेको सुठा सिंधी आहिनि अगरि जेके पैसे वारा से सभु उन्हनि वॾनि माण्हुनि जे हथनि में आहिनि. तिन खे जेके वॾेरा आहिनि तिन जी पंहिंजी सियासत आहे. ऐं जेके बि चङा सिंधी पढ़ियल गढ़ियल आहिनि हमेशह मुसीबतुनि में ऐं हमेशह ॾुखनि में ई घारे हलिया विया आहिनि. बेंगाली 30 लख माण्हू मारिया ऐं बेंगाली कीअं विढ़िया आख़िर ताईं मुजीब जंहिं ॾींहुं हिनखे छॾिणो अथसि मूंखे मुजीब जी इन करे ख़बर आहे त मुंहिंजो बाबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो अवामी लीग जो. आख़िर में गॾु हुअसि त मुजीब सभु भॼी विया हिते कमर ज़मा भॼी विया डॉक्टर कमाल भॼी विया खोंदकर भॼी विया. तूं भले वञ चई मां लीडर आहियां मूंखे मरणो आहे ऐं मां भली फ़ौज खणी पर मां कॾहिं कसम खणी चई त मां नथो चाहियां त असां पाकिस्तान खां जुदा थियूं. पर हालात अहिड़ा कया विया उनजा माण्हू मारे उन्हनि खे तबाह बर्बादु करे पोइ हुननि कीअं सर्वाइव कया. असांखां इलाही सुठा तव्हां पैसे जे लिहाज़ सां महिनती हर शइ में असां कज़ोर आहिनि. 1913 में बाबा खे हिननि अवॉर्ड ॾिनो पोइ असांखे हिन घुराए सॼियूं शयूं ॾेखारियनि. घर में रत जा दॿा हू चवंदा आहिनि त भई अलाए शहीद जो रत छा रत जा दॿा ॻाढ़ा पिया आहिनि त शीशा लॻा पिया आहिनि. जीअं हुनखे कयो त उन चवनि था त असांजे ISI जो हथो हाणे वधीक अलाह बहितर थो ॼाणे पर बेंगालियुनि हिननि सां बाक़ाइदे मुक़ाबिलो कयो. जिन सभु पूरा दरिया ॾेखारियनि फोटोग्राफीअ में ॾेखारियनि त हिन जो BBC वारनि जूं फिल्मूं ठहियल सॼा दरिया रत लॻा पिया जंहिंमें वॾा वॾा डॉक्टर वॾा वॾा प्रोफेसर ईअं त को नंढा माण्हू जेके हुन इंटेलेक्चुअल बाक़ी क्रीम हुई उन सभिनी खे मारे उन दरिया में लोड़ियो अथनि. आख़िर में टिका खान थो चए त असांखे ज़मीन खपे असांखे बेंगाली माण्हू न खपनि. साॻियो सिंध जो हाल आहे सिंधी न खपनि असांखे सिंध जी ज़मीन. सिंध सॼे पाकिस्तान में अमीर तरीन सूबो आहे जियोलॉजिकल हिसाब खां
कोयले में तेल में तव्हां जंहिं शइ में बि ॾिसो त सिंध खे हिननि हर तरह सां वकोड़े छॾियो आहे ऐं सिंध खे आज़ादु करणु असां तव्हांजे बस जी ॻाल्हि आहे ही वॾा असांजा चाहिनि असांजा अमेरिका वारा चाहिनि त कुझु थी सघे थो बाक़ी क़तलो ग़ारत सिंधी किथां कराईंदा बाबा इंदिरा सां मिलियो मुजीब ॾियण सां त भाई मुजीब गॾु मिल रहियसि त भई तव्हां सिंधु देश जो कुझु कयो चयईसि त इंदिरा गांधी चयसि त 2 लख माण्हू माराईंदो चयोसीं हिकिड़ो माण्हू कोन असां सिंधी अमन पसंदि आहियूं असां माण्हू नथा माराइणु चाहियूं चयोसीं हिकिड़ो सिंधी कोन माराए सघंदासीं की पोइ तव्हांखे आज़ादी मिली असां सां इहा ई वेद न त असां न पाण विढ़ण जहिड़ा आहियूं न असांखे के रिसोर्सिस आहिनि तंहिं करे असां सभु गॾिजी ख़ाली ॿधी कयूं ऐं पंहिंजी दिमाग़ ई वॾे रहे असां सभिनी खे थोरी वॾे रहे पई बीमारी मां को चङो माण्हू आहे मूंखे का चङी जाइ मिले बाबा उहे माण्हू हुआ जेके कमु करे विया जिन कॾहिं सोचियो बि कोन अदा अहमदाबाद वेठो न किथां हलियो आहे हल कुझु बि कोन अथसि त बि पंहिंजो रेडियो लंडन हलाए पियो थो न हिमत आहे ताक़त आहे माण्हू पंहिंजी मोहबत आहे तॾहिं करे पियो थो असां सभिनी खे घुरिजे हिकु मोहबत सचाई अना कूड़ी अना खे छॾे ॾियूं असांखे सिंधियुनि में अना बि आहे मायूं बि अना वारियूं आहिनि भाई धड़को ॾींदो माई एॾी कावड़ अची वेंदी त अलाए छा उते ई साईं कंहिं ॿिए सूबे जी माई हूंदी मार बि खाईंदी अथई साईं सलाह लिखूं त असां सभु अना जा हो आहिनि त अना छॾियूं पंहिंजे ज़हनी वॾराए पिया छॾियूं ऐं सिंध जे लाइ सचाई सां कमु कयूं वधीक मां कुझु Now I would like to request Suhail Memon. He is a political analyst, journalist, writer and a lawyer. He is the author of 4 books and more than 400 newspaper articles published in various newspapers on the topics of human rights, international relations, national and international political situations, disaster relief, and culture and society. He has worked as liaison to many international organizations and have worked with CNN, BBC 2, CBC, Swiss Radio, Belgium TV, and German news on assignment basis and had contributed in more than 100 stories on different current and disaster issues. Over to you, Suhail Singh. Thank you very much. Old friends, I say old because I am bonded with the WSC since when they started the work. I think 15, 17 years, and trying to keep coming in every conference and updating my friends and updating the listeners what kind of situation over there. Though everybody knows what is going on, the media has changed the world as a global village. Whatever going on, what is happening, how people thinking, what kind of discrimination over there, human rights violations, sources violations, mass scares, conspiracies, everybody knows. But when we are looking every day, every time, on every nook and corner of our land, what is happening, it is very painful. Let me say, because about the resources, I'll say something. There's no doubt what the state had done with us, what they are doing. Even the political parties, what they are doing, elected by with our own vote, what they are doing, they are backed by the state. But do you know, I'm just giving you one example. We got 120 billion rupees, so Joey Arab, in only last 15 years as a royalty of gas and oil from federation to the province. Where this all money gone? It all came to the Sindh government. And who is ruling in the government in Sindh? What is happening with the municipality of Rodi? What is happening in the Thar where Sharjeel Memon took up trillions of rupees of the water for the poor people, the water life in the Thar. He took it and came here and living here a lavish life, meeting with the people. Many of us, when he is coming, we are, welcoming him. What about the hepatitis, millions rupees of hepatitis, B and C? You cannot imagine how many people from the Sindh are suffering from the hepatitis. Countless. सॼियूं जेके लेबोरेटरीज़ जेके रत पियूं टेस्ट कनि
लाड़काणे में, उन जा तव्हां फैक्ट फिगर त ॾिसो। हींअर लास्ट मंथ में रिपोर्ट आई आहे त डायलिसिस जेके कराईंदा आहिनि, डायलिसिस वारा, हू लाड़काणे मां डायलिसिस पिया कराइनि ऐं उन्हनि डायलिसिस मां जेकॾहिं 100 पेशेंट हुया त 50 खे HIV थी वई आहे। Who is doing this? The People's Party is ruling on the since 10 years with the absolute power. Yes, they are backed by the state, I know that. If they were not, then how Shahjeen Mehmed could go out of the country, and then when he already went out and he was put on the ECL. But what about those people? जेके असांजी नालियुनि जो पैसो था खणनि, जेके ॿारनि जी तालीम जो पैसो था खणनि, जेके म्यूनिसिपलिटी पीअण जो पाणी था खणनि, जेके दवाऊं था खणनि, they are from us and among we are even voting them. But they are claiming one thing I'll clarify. In last election, the ratio of the voting was not more than 40%. I mean, if we will count this way, they can claim that they have the mandate. But once again, when I am telling you what they are doing, our people, our Vaderas, our Sardars, our peace, what they are doing in the Sindh, असीं पाण पे उनखे इलेक्ट कयूं था, मूंखे पुछंदो न। But have you, I mean, very deeply, have you examined the system of the election in the Sindh? Is it democratic system? Police जो SHO, कोर्ट जो जज, तरह जो वडेरो ऐं पैसो, एब्सलूट पैसो जेको करप्शन मां कमायल आहे, उहो कंहिंखे बि एमिनेट करे सघे थो। When there was Arbab Rahim as a CM, People Party had won only one seat of the Nazim. It means that if I will be CM, I can sweep up, I can kick out everybody, the biggest party, I can win. It proved that how they are winning the elections, and then they are looting the peoples. In the name of democracy, धोखो पियो थिए। इहा ॻाल्हि आहे ई कोन। मज़लूम माण्हू हिकिड़ा सियासत खां बेज़ार थी विया आहिनि, उहे वोट कोन पिया कनि। हिकिड़ा जेके वोट कनि ई नथा त फ़रिश्ता वोट पिया करे वञनि। ऐं उनखां पोइ आउं चवंदो आहियां, मूंसां भली डिबेट कयो, हिकिड़ी MP जी सीट ते इज़त सां हाराइण लाइ त बाबा ही सोहेल मेमून आहे, पॉलिटिकल वर्कर आहे, शरीफ़ माण्हू आहे, ख़ानदान तर इलेक्शन विड़ियो, इज़त सां हाराइण लाइ बि मूंखे 50 लख खपनि। सियासत खे एॾो महांगो कयो वियो आहे जो तव्हां ऐं असीं सोचियूं ई कोन था। ही असांजी सिंध वटि पीअण जो पाणी कोन्हे, असां वटि 40,000 गोस्ट टीचर आहिनि जेके सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पॉलिटिकल जेके आहिनि पावर उन्हनि कया आहिनि। उन्हनि खे वरी चवंदुमि त हू इज़ बैकिंग देम, ओवरऑल हू हैज़ द पावर, दे आर बैक्ड बाय द स्टेट। ऐं उहे दवाऊं कोन्हनि, इस्पतालूं कोन्हनि, वञे थो को ब्लड हणाइण त HIV जो एड्स खयों पियो अचे। मां चवंदो आहियां त कराची खां ॿाहिरि सॼी सिंध में का हिकिड़ी इस्पताल कोन्हे, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल जिते पंहिंजो मरीज़ खणी वञिजे ऐं उहो मरी वञे त चइजे त असां पंहिंजे पासों कोन घटायो। पोइ बि कराची में 2-4 हिंदू तो सखर मां हुतां मरीज़ खणंदा आहियूं, कराची पहुचाईंदा आहियूं, पोइ दिलि चवंदी आहे बाबा असां कोन घटायोसीं, हाणे जेका रज़ा रब जी। कंहिं बि तव्हांजे कंहिं बि हैदराबाद में इवन कोन्हे। जेके बि आहिनि सभु धोखा। जे डॉक्टर आहिनि त उहे कमु कोन था कनि, मशीनूं कमु कोन थियूं कनि, मतिलबु सॼो करप्शन जो हिकिड़ो बाज़ार लॻो पियो आहे। हाणे इहा करप्शन वरी अचां थो त इहा जेका सिचुएशन आहे उहा बैड गवर्नेंस जे करे आहे, करप्ट गवर्नमेंट जे करे आहे। इहो जेको असांखे ॾिसो, मुंहिंजो कंसर्न हू असीं सॼी उमिरि कंदा आहियूं। मतिलबु मूंखे कोई चए त मां उन्हनि खे छा बेनिफिट ऑफ डाउट पियो ॾियां, जेके असुल मुल्क जा मां हुन ते अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे। पर मां ॿुधायां थो त मुंहिंजो कंसर्न नाली आहे, पीअण जो पाणी आहे, ॿार जो स्कूल आहे, इस्पताल आहे, जंहिंमें असांखे गुज़िरियल 15 सालनि में त भींग करे छॾी अथऊं। ऐं एतिरो पैसो आयो आहे
सिर्फ़ु हीअ जेका रॉयल्टी आई आहे 124 अरब रुपया सिर्फ़ु हिकिड़े डिपार्टमेंट जी रॉयल्टी आहे। 40 अरब जो लाड़काना पैकेज आयो, जिते मां चवां थो 40 अरब ख़र्च कंदुसि, लाड़काने में संगमरमर जा रोड हुजनि। हा, लाड़काने जी हालत ॾिसो, वई ठहिड़ी पियो। ऐं इहे माण्हू ईंदा आहिनि, माफ़ु कजो, असीं वरी हिते हुनजा आजाणा कंदा आहियूं। असीं माना आई एम टॉकिंग जनरल, असीं हुननि खे हार पाईंदा आहियूं, फ़ोटू कढाईंदा आहियूं, सेल्फी रखंदा आहियूं। उनखां इहो नथा पुछूं त बाबा थर जे लखे माण्हुनि जे पीअण जो पाणी खणी तूं हिते वेठो आहीं। बुनियादी तौर ते असांखे इहे ॿई शयूं फेस करणियूं पवंदियूं। हिकिड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन्स आहिनि, टोटली नेशन टू नेशन डिस्क्रिमिनेशन आहिनि। बलोचिस्तान में सूरत हाल ख़राबु लॻी पई आहे। ऐं चवंदो आहियां त सिंधियुनि सां त वरी बि आहे इहो त सिंधी आबादी में त तमामु घणा आहिनि। बलोचिस्तान सां त इशू इहो आहे त हुनजी आबादी तमामु थोरी आहे। मां अर्ज़ु कंदुमि त घोड़े खे घोड़ो चवणो पवंदो, गॾह खे गॾह, ॿई बराबरि कॾहिं बि कोन थींदा। असां इहो ई था कयूं त हाणे आयो आहे महिमान आहे, हाणे असांजी सिंध खां आयो आहे वज़ीर आहे MNA आहे, वरी लेटी था कयूं ऑनेस्टली। त अचो साईं अचो। अमेरिका में मां रहियो आहियां काफ़ी, उते त साईं वेड़ थींदी, जहिड़ो थींदो त हे मुंहिंजी मानी खाईंदो, ॿियो चवंदो मुंहिंजी मानी खाईंदो। हालत लॻी पई असांखे। ॾिसो, मुंहिंजे चवण जो मतिलबु इहो आहे, मां को तनक़ीदी उहो नथो कयां। मूं वटि वॾा फोरम आहिनि, मां लिखंदो आहियां, कुझु किथे बि मूं वटि लिखी सघां पंहिंजी। चवण जो मतिलबु इहो आहे त असीं जेके इन आज़ादु मुल्कनि में रहूं था, असीं जेके फाइनेंशियली सेट बि आहियूं, क़ौम जो दर्द बि रखूं था, असांखे बीहणो पवंदो। सोसाइटी मां एग्ज़ाम्पल ख़तमु थींदा था वञनि, असांखे एग्ज़ाम्पल रखणा पवंदा। अछे ऐं कारे जी तमीज़ रखणी पवंदी। सो महिरबानी करे, बिल्कुलु मञा थो त स्टेट जा उहे सॼा ॻाल्हि वञी उते ई थी बीहे, ॻाल्हि वञी उते ई थी बीहे त टपी करप्टा अकाउंटेबिलिटी ईंदो, फ़ौज अची वठो टपी खे खिची खां, ख़बर पई टपी मुल्क खां ॿाहिरि। हाणे सुवालु आहे त टपी खे मुल्क खां ॿाहिरि छॾियो कंहिं? सो मुंहिंजा महिरबानी दोस्त, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि असांखे बीहणो पवंदो। कुझु बि कोन्हे, क़ौमुनि ते इहे वक़्तु ईंदा आहिनि, हिन खां बुरा वक़्तु आया आहिनि, का ॻाल्हि ई कोन्हे। माण्हू कम्पीट कनि पिया, माण्हू महिनत कनि पिया, आम माण्हू तकलीफ़ में हूंदे वीचारो पंहिंजी महिनत पियो करे। सिंध जा नौजवान पढ़नि पिया, प्राइवेट इदारनि में अचनि पिया, मज़दूर कराची में अचनि पिया। कराची सॼी भरिजी वई आहे मज़दूरनि सां, लेबर सां, सिक्योरिटी वारनि सां। उहो कराची हलीम जेको उर्दू स्पीकिंग जी साइन हूंदो, ऐं उन ते थो वञा त उन ते बि कमु करण वारा सिंधी। यकीन कयो, हिकिड़ो लास्ट मिसाल ॾींदुमि मां, पोइ ऐं रखंदुसि। सिक्योरिटी एजेंसीज़ जेके हूंदियूं आहिनि प्राइवेट, इन में कॾहिं बि सिंधियुनि खे न खणंदा हुआ, छो जो पठाण सुठो चौकीदार आहे, पठाण चौकीदार सुठो आहे। थियो छा जो सभिनी में पख्तून हुजनि, उनजो शनाख़्ती कार्ड बि ओरिजिनल हुजे, पर हाणे 4 बैंक जा पठाण गार्ड ईअं थियो, जस्ट अ सेकेंड सर, बैंक जी गाॾी लुटे हलिया विया। इहे रोड पिया थियनि ते, काॾे विया? वज़ीरिस्तान। NIC बि सही अथनि, एड्रेस बि सही अथनि, माण्हू बि आहिनि, हाणे उन्हनि खे वठी केरु अचे थो? इहो साईं थियो पिए। इन छा कयो? हुननि चयो त बाबा लोकल रखो, ऐं हींअर घटि में घटि 15,000 सिंधी सिक्योरिटीज़ में कराची में कमु पिया कनि। लोकल उते जो आहे, रीच में आहे ऐं करे पियो। थैंक यू वेरी मच। ऐं मां घणो टाइम वरितो, हुनजी बि वॾी महिरबानी। I would like to request Mr. Javed Sumro. He's a renowned journalist working with BBC London. He's the journalist of integrity. I would request him to share his thoughts and with brief, please. I will request. Thank you. Extremism in Pakistan in general is obviously no secret that is rising, and is rising very rapidly. And for considerable time we thought, naively most of us, that because Sindh is kind of a Sufi land, it's been peace-loving people in Sindh, and the extremism will be very hard to rise in Sindh, and we believed in that notion for a very long time. But the honest truth is that it is emerging, and not only in Karachi or big cities, but even smaller
cities and towns and widespread spans of land, the extremism is emerging. About 12, 13 years ago, the situation wasn't that bad, but there was some signs that extremism is emerging in land of Sindh. And at that time, I did a series of stories for the BBC Urdu service and for Hindi service. And I traveled to different parts of Sindh to find out how serious is the case. So it wasn't that bad, but the kind of spread of madrasas and the education talib who were studying in those madrasas were getting was quite alarming. I met a boy, very young, kind of a 23, 24 years old youngster, and from a very well-off family. I was told by a friend of mine that he went to Afghanistan for jihad. And I said, no, it can't be true. It can't be true. He's an engineer. He did his BE from Mehran Engineering University, Jamshoro. His father was a high, ranking official in Sindh government. So you can't be right that he went to Afghanistan to do jihad from Ladkana. He said, do you want to meet him? I said, yes, of course I want to meet him. So I met him, a very good-looking, handsome guy with 2 kids, bearded, not kids, he himself. So I asked him, did you go to Afghanistan for jihad? And very proudly he told me, yes. I said, how did you end up in Afghanistan? I mean, you don't look like a typical jihadi. How did you end up in Afghanistan? And he replied, he took a name of a very famous religious leader who is dead now, from Ladkana. And he said he gave me a chit for a commander in Chaman. And that Chaman guy took him across the border into Afghanistan, handed him over to somebody for the jihad. So I said, then how did you come back? Why? I thought if you are there, you will die or come as a victorious Ghazi. How did you come back with your 2 kids and continued with your job and stuff? He said, my father came over. Somehow he found out that I'm gone. So he dragged me into Afghanistan through the letter of same religious leader who handed him over to Chaman, and Chaman handed him over to Afghanistan, and he found out him, and he took me back. So I said, but why did you listen to your father? You should have just told him that I'm here for jihad and I'm not going to go back. He said, yes, that's right, but in Quran it says you follow your parents. But then he said, but now I realize that if even my father comes and stops me from jihad, I will shoot him first. So that was about 13 years ago. And since then, things have took a turn for worse. Now the spread of madrasas, some of madrasas I have lived in to find out firsthand that how the situation is inside, and the number of young Sindhis getting into jihadi mindset. Now, exactly similar things happen in Balochistan. Most Baloch people, if you talk to them, they will claim or say they are very secular people, and no doubt they are, still in majority. But the number of people turned into jihadis and vicious sectarian militants is alarming. They have already turned KP and Pashtunkhwa and tribal areas into a hotbed of terrorism, and now the same forces, until and unless Pakistani people and the state realizes that is not the course to take, I seriously doubt that Pakistan will turn into any. I mean, there will be some times when the state or the security agencies and the forces will fight against terrorism who threatens them. They will fight against them. They will try to eliminate them. They will restore peace to some extent in some parts of the country. But until the fundamental
kind of ideology or the narrative has changed in Pakistani society as a whole, in all levels, I don't see any much hope that people will prosper or be a democratic society. Thank you. Thank you, Javed. Now we have the last speaker of this session, another journalist from Sindh, works with BBC, Riaz Suhail, having a very great reputation in his reporting. I would request him to share his thoughts. जीअं जावेद साहब वरी तफ़सीली हिन ते ॻाल्हि ॿोल कई, मां उनखे कंटिन्यू कंदुसि। कल सुबुह हिकिड़ो मैसेज आयो, क्लेम आयो बल्कि लश्कर जंगवी जो, त कोयटा में 2 पुलिस एहलकारनि खे उन्हनि मारियो, पर उहो पलांद हो जेको हैदराबाद में उन्हनि जे 3 कारकुननि खे पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कई हुनजो। त हिन मां असांखे अंदाज़ो थिए थो त लिंकेज केतिरो आहे। ज़ाहिर आहे त हिन में असां बलूचिस्तान जा दोस्त वेठा आहिनि, इन्हनि जो को न आहे, पर असांखे लिंक कहिड़े नज़रियाती तौर ते लिंक केॾां मोड़ियो पियो वञे उन ते ॾिसण जी ज़रूरत आहे। गुज़िरियल कुझु अरसे खां असां इहो बि ॾिसूं था त अपर सिंध, ख़ासि तौर ते शेदादकोट, कशमोर, जैकबाद, शिकारपुर, इहो मुसलसल हिते वाक़िया वधीक थिया आहिनि। यानी जेकॾहिं 4 सुसाइड बमिंग शिकारपुर में थी आहिनि ऐं हिकिड़ी जैकबाद में थी आहे। जॾहिं असीं इन खे तलाश कयूं था विदिन पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू खां बि, त असांखे इहो ॿुधायो थो वञे त इहो सिलसिलो चमन, मस्तूम, खुज़दार, शिदादकोट, पोइ शिकारपुर में दाख़िल थिए थो। जॾहिं खुज़दार जी ॻाल्हि अचे थी, हुते शफ़ीक मेंगल जे नाले सां हिकिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे ऐं इहो बि रिपोर्टेड आहे त उनखे कंहिंजी सपोर्ट हासिलु रही आहे ऐं डेथ स्क्वाड छा थींदो आहे तव्हांखे बि ख़बर आहे, मूंखे बि ख़बर आहे। त उहो हिकु क़िस्म जी जेका लेटेस्ट एक्सट्रीमिज़म जी जेका सिंध में लहर दाख़िल थी आहे, उहा जीअं कंधार मां कंहिं ज़माने में लतीफ़ साईं चयो त हिकिड़ी हवा हले थी, थधी हवा हले थी, उतां खां जेका हिते दाख़िल थिए थी, त इहा जेके बारूद जी बू बि हुतां खां ईअं हेसि ताईं पहुती आहे, जेका अॻियां वधंदी थी वञे। पंहिंजे तर्ज़ में जेको एक्सट्रीमिज़म आहे, उहो जेकॾहिं मां इन खे 3 हिसनि में बयानु कयां, ऐं यकीनन मां मुंहिंजो न को कंहिं मज़हबी जमात सां तालुक़ु आहे, न को कंहिं सियासी जमात सां तालुक़ु आहे, न कंहिं क़ौम परस्त जमात सां तालुक़ु आहे। पहिरीं ॻाल्हि वाज़े आहे, मां हिकिड़ो जर्नलिस्ट आहियां ऐं जेके फैक्ट्स आहिनि उहे रिपोर्ट कयां थो। जावेद साहब नालो न खयो, मां नालो खणां थो। ख़ालिद महमूद सूमर जो जॾहिं वाक़ियो थियो त सिंध में तमामु असांजे चङनि ख़ासनि बाशूर दोस्तनि जा असां कालम पढ़िया, मज़मून पढ़िया ऐं उन्हनि सिंध लाइ वॾो नुक़सानु करार ॾिनो। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त संदसि मौजूदगी सिंध लाइ वरी नुक़सानकार हो, छो त मूं ॾिठो आहे त जेकॾहिं थर ताईं बि जेकॾहिं को मदरसो आहे त उहो JUI जो आहे ऐं उहा JUI ज़ाहिर आहे त एक्सट्रीमिज़म खे हिकिड़ा बेसिस खपनि, हिकिड़ी आइडियोलॉजी खपे, हिकिड़ो नज़रियो खपे, उहो JUI फ़राहम कयो। उहो ई माण्हू हो जेको तव्हांखे कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ु रैलियुनि में बि मिलंदो, NFC ते बि उनजो मौक़िफ़ हूंदो, पर जेका सोच ख़्याल जंहिं क़ौम खे सेक्ट में विरहाए त उहो क़ौम परस्त मुंहिंजी ज़ाती राय त नथो थी सघे, छो त क़ौम कंहिं बि सेक्ट खां, कंहिं बि मज़हब खां बालतर हूंदी आहे, छो त क़ौम हिकिड़ी यूनिटी आहे। त सिंध में एक्सट्रीमिज़म जो बेसिस JUI आहे। हुन खां पोइ हिकिड़ो ॿियो रूप आहे हुनजो, जेको बरेलवी स्कूल ऑफ थाट आहे, जंहिंखे असांखे मियां मिठू जी सूरत में नज़र अचे थो, या सामारे में सरंदीन जी सूरत में नज़र अचे थो, जिते फोर्स कन्वर्जन जा वाक़िया थियनि था। हिकिड़ा फोर्स कन्वर्जन उहे आहिनि जंहिंखे पाण चऊं त ज़बरदस्ती हाणे उन्हनि खे मुस्लमान कयो वियो, यकीनन हिन में ईअं अहिड़ी रीति बि न आहे, मगर उन में पंहिंजी उन मर्ज़ी थोरी घणी शामिलु हुजे थी। मगर इहा आहे त 18 साल जी उमिरि खां घटि छोकिरियुनि जी एज हुजे थी जॾहिं बि उन्हनि जो इहो वाक़ियो थिए थो, ऐं इहो इन्हनि लाइ हिकिड़ो फ़ख्रिया मिशन आहे। तव्हां ॾिसंदो त मूं पाण उहे रजिस्टर ॾिठा आहिनि सामारे में,
जेके कन्वर्ट थियण लाइ अचनि था उन जो नालो शनाख़्ती कार्ड नंबर या उनजे वालिद जो नालो पूरो उन वटि हिकिड़ो डिटेल्ड मौजूदु आहे। ऐं जेकॾहिं पाण इहो चऊं था त हिन साल जेकॾहिं 15 पाण वटि केस आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते असां डेवलपमेंट सेक्टर में जेके NGO सेक्टर में या ह्यूमन राइट्स सेक्टर में कमु कनि था उन वटि तमामु लेस फिगर आहिनि। लास्ट ईयर असांजो वञणु थियो सामारे 350 माण्हुनि जी त उन वटि पिक्चर्स सां गॾु डिटेल हुआ जंहिंमां 80% औरतूं हुयूं। त जेकॾहिं मुस्लमान थियण जो रुझान औरतुनि में ई छो आहे, हिकिड़ो क्वेश्चन आहे त मर्दनि में छो न आहे? छा औरतूं घर में एतिरो फारिग आहिनि जो एतिरो स्टडी कनि थियूं जो उपवाद में एॾा अचनि थियूं? ख़ैर, ऐं ॿियो मियां मिठू वारो पासे आहे, हिन में सियासी असर रसूख़ बि आहे, माशी असर रसूख़ बि आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजी बालादस्ती ॾेखारणी आहे। इन करे हू उते पंहिंजे हिन असर खे मज़हब जी सूरत में इस्तेमालु कनि था। इहो यकीनन हिकिड़ो न्यू फैक्टर आहे। सिंध में शियाइज़म बि हुनजी हिकिड़ी पॉलिटिकल शक्ल निकिती आहे। अॻु में जेको शिया सेक्ट हो हिकिड़ो रूहानी सेक्ट हो जेको तमामु निवड़त हूंदी, मगर हुन में हाणे हिकिड़ी मज़ाहिमत आई आहे। मज़ाहिमत बि मिलिटेंसी में आई आहे, त उहो बि असांखे नज़र अचे थो ऐं उहो डायरेक्ट लिंक आयो आहे कराची जी मिलिटेंसी खां। छो त कोयटा में जॾहिं हज़ारा शिया जी कम्यूनिटी जी जॾहिं वाक़िया थिया पे त कराची में ॿिए सेक्ट जी किलिंग तमामु वधी वई ऐं हुन में पोइ उन ई सेक्ट जा हिते टारगेट किलर बि गिरफ़्तार थिया हुआ। इहे जेके न रिकॉर्ड जी शयूं आहिनि। त अहिड़ी रीति शियाइज़म में बि हिकिड़ी जेको आहे एक्सट्रीमिज़म जी हिकिड़ी लहर आई आहे। हिन में जेकॾहिं इहो सभु कुझु थिए पियो, यकीनन उहे ॿाहिरां माण्हू न आया आहिनि, असांजा सिंधी माण्हू आहिनि जेके इन्हनि सेक्ट्स में वञनि पिया या इन एक्सट्रीमिज़म में वञनि था। जीअं हिकु मिसाल तव्हांखे जावेद ॾिनो, हीअं तव्हांखे यादि हूंदो त हीअं रिसेंटली हिकिड़ो अलक़ाइदा जो लीडर गिरफ़्तार थियो, हुनजो नालो जलाल हो ऐं हू कोटड़ी जो रहंदड़ हो। कोटड़ी पंहिंजे सिंध जो हिसो आहे। अहिड़ी रीति जॾहिं मुंहिंजो दादू में वञणु थियो, दादू में हिकिड़े पुराणे कॉम्परस कारकुन सां मुलाक़ात थी जेको मेरान यूनिवर्सिटी में जसाव जो सदर रहियो। उन हू अॼुकल्ह सिपाही साहिबा में आहे ऐं उन फ़ख़्रिया तौर ते मूंखे ॿुधायो त हुनजो फस्ट यूनिट इंचार्ज आउं आहियां हिते, पर हुनखे अञा पंहिंजी कॉम्परस्ती ते बि यकीन हो ऐं उहो अॼु बि सिंध देश जो हामी हो। त इहा हिकिड़ी कंट्राडिक्शन ज़रूरु मौजूदु हुई। अहिड़ी रीति ॿियो हिकिड़ो इहो बि आहे त सोसाइटी में एक्सेप्टेंस केतिरी आहे हिन जी एक्सट्रीमिज़म जी। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहा वधी रही आहे। सिंध में हींअर एजुकेशन एमरजेंसी आहे। गुज़िरियल 10 साल हाणे 8 साल थी विया आहिनि, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आहे। जेकॾहिं एजुकेशन बहितर हुजे हा त अॼु सुठी तालीम हासिल करे को ॿार 8 में पहुची चुको हुजे हा, मगर इन 8 सालनि में एमरजेंसी आहे। उहो एमरजेंसी आहे यानी बदतरीन एजुकेशन सिस्टम आहे। त उहो ॿारु केॾांहुं पियो वञे? यकीनन मदरसो छो ग्रो थियो आहे? मदरसो इन करे ग्रो थियो आहे, एजुकेशन सिस्टम नाकाम आहे। थर में सभ खां वधीक अॼुकल्ह मदरसा नज़र था अचनि। हिकिड़ियूं उहे जमातूं आहिनि जेके यकीनन असीं चई सघूं था उनमें सिंधी न आहिनि, इहे तमामु घटि आहिनि। जमात इस्लामी, जमातुल दावा, जैश ए मोहम्मद, जेके सिंध में हींअर हर उन इलाइक़े में मौजूदु आहिनि जिते सेटलर आबादी आहे। मुंहिंजो चवण जो मतिलबु आहे सांगड़, मीरपुरख़ास, उमरकोट, बदीन, ठट्टो, हिते सेटलर आबादी आहे। नवाबशाह हुते मौजूदु आहे। हिते हर जाइ ते उन जा स्कूल बि आहिनि ऐं अस्पतालूं बि आहिनि, यानी जेको वॉलंटियरली जेको हू ख़िदमतूं ॾियनि पिया, त उनजी पूरी ख़्वाहिश आहे त माण्हू बि वॉलंटियरली उन्हनि खे जॉइन कनि। इहो ज़ाहिर फोर्सली उहो न पियो थिए। त इहे जेके सर्विस बि फ़राहम कनि पिया ऐं माण्हुनि वटि पंहिंजियूं हमदर्दियूं बि फ़राहम कनि था। ख़ैरपुर में 3 साल अॻु में हिकिड़े मदरसे हलाए थो साईं, उनजा कोई 8-9 मदरसा आहिनि। हुन वटि माण्हू कंप्लेन खणी अचनि था पंहिंजी, त पाणी जो इशू आहे, बिजली जो इशू आहे, पुलिस जो इशू आहे। उन रजिस्टर थिए थो, उन ते पोइ फॉलो थिए थो। मूं उन्हनि खां पुछियो त तव्हां वटि छा ताक़त आहे हल करण जी? उन्हनि चयो असीं रोड बंदि कंदा आहियूं ऐं एडमिनिस्ट्रेशन असांजा मुतालबा मञी वठंदी आहे। त माण्हुनि खे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो रिलीफ मदरसो ॾियणु लॻंदो त यकीनन पॉलिटिकल वर्कर अॻे जॾहिं अॼु खां
वीहारो साल अॻु में असीं जॾहिं पुछंदा हुआसीं जॾहिं ॿुधंदा हुआसीं कामरेड त हर माण्हू लाइ इहो हूंदो त हीउ यानी मुंहिंजे मसइले जो हल इन वटि हूंदो को न को तरीक़े सां ही प्रेस में खणी वेंदो या इनखे के कैंपेन में इस्तेमालु कंदो या प्रोटेस्ट कंदो त असांजो मसइलो हल थी वेंदो। मगर सिंध में हाणे कामरेड मीन्स के ठगी भताखोरी या कमीशन एजेंट त हुनमें जेको सोसाइटी सिंधी सोसाइटी हिन वक़्तु एक्सट्रीमिज़म के क़बूलियत वारे शोबे में बि वञे पई क़बूलियत वधे थी त ज़ाहिर आहे त उहो उनजो फैलाव बि वधंदो वेंदो। वॾी महिरबानी जेकॾहिं कंहिंखे ॻाल्हि पसंदि न आई हुजे त फैक्ट्स आहिनि। Thank you, Riaz. Thank you for sharing the ground realities and narrating them. To wrap up this session, now I would like to request Sagir Sheikh. He's PhD and he's based in California. He was General Secretary of World City Congress. Dr. Sheikh has been active in different social and political forums from age 5. He's one of the founding members of the Sindhi Baloch Forum, Pakistanis for Peace and Alternatives, and an active member of Sindhi Association of North America. I would like to request him to share his thoughts on CPEC. तव्हांखे कुझु 5 या 6 पॉइंट ॿुधायां त CPEC जेको प्रोजेक्ट जंहिंजे लाइ असां तव्हां बि ॿुधो आहे असां बि गौर कयूं पिया वेठा ऐं पाकिस्तान जी मिलिट्री ऐं पाकिस्तान जी जेकी स्टैब्लिशमेंट आहे उहो फुल फ्लैश उन्हनि जेको आहे प्रोपेगेंडा करे रहिया आहिनि त इहो पाकिस्तान ऐं अवाम दोस्त हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे त मां चाहींदुमि त तव्हांखे मुख़्तसिर उन जी 2 टे टेक्निकल आस्पेक्ट ॿुधायां त जीअं तव्हांखे पाण खे ख़बर हुजे त असां जेके पाण डेवलपमेंट ऐं प्रोग्रेस कंट्री में रहूं था ऐं असां छो पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ प्रोग्रेस ऐं डेवलपमेंट जे हिकिड़े प्रोजेक्ट जी मुखालफ़त था कयूं। बाज़ारि इहे लॻे थो त बाबा असां हिते वेही करे चऊं था त भई को अहिड़ो प्रोजेक्ट हुजे जेको पंहिंजे माण्हुनि खे तरक़ी ॾिए त तव्हां हुनजी मुखालफ़त छो था कयूं। हिकु तरफ़ असां चऊं था सिंध वधे बलूचिस्तान वधे पर हक़ीक़त में छा आहे जो हुन जा 4 या 5 पॉइंटूं यादि कजो। हीउ प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना जी हिकिड़ी तमामु ग्रैंड जेको आहे प्लान आहे स्कीम आहे उन में हुननि खे ईज़ी अप्रोच खपे पोर्ट्स ऐं पाणीअ जूं त तव्हांखे यादि आहे ग्वादर में हुननि जेको बलूचिस्तान जी जेकी एक्सप्लॉइटेशन कई सालनि जा साल सॼी प्रीमियम लैंड वठी करे गैर बलोचनि खे ॾेई छॾियऊं ऐं उन सॼे सिस्टम में हाणे उहो चाहिनि था त चाइना खां वठी हिकिड़ो रोड ठाहिनि ऐं उहो ग्वादर सां हुनखे कनेक्ट कनि। हुनजो नालो रखियो अथऊं चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। उहो हक़ीक़त में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर न आहे पर चाइना पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर आहे। उहो ईअं जो ॾिसो हुननि 80 बिलियन रखिया आहिनि पंजाब लाइ 40 बिलियन रखिया अथऊं ख़ैबर पख्तूनख्वा लाइ 20 बिलियन रखिया अथऊं बलूचिस्तान लाइ ऐं 6.5 बिलियन रखिया अथऊं सिंध लाइ। हाणे इहे जेके बि ख़र्चु थींदा उन में मेजॉरिटी चाइना खां थो अचे पैसो कुझु पंहिंजो पैसो विधो अथऊं असांजे ग़रीबनि जी टैक्सूं वैक्सूं अथऊं जूं कढी करे हाणे उहो उनजो मेजर पोर्शन सम्झो 80 माना 50% वञे थो पंजाब में ऐं बाक़ी 50 या 60% पंजाब ॾे थो वञे बाक़ी ॿियनि 3 सूबनि में उन में बि ख़ैबर पख्तूनख्वा खे वॾो हिसो आहे ऐं बलूचिस्तान ऐं सिंध खे एज़ यूजुअल माटेले पुट ऐं माटेली धीउ वांगुरु असांखे घटि हिसो मिलियो। उनखां बाद में बि इन में बि इहा बेआजबी करण खां पोइ बि हू छा था कनि जो पहिरियों कमु शुरू कराए थो पंजाब में। हाणे अलाए छा थिए 2-3 सालनि में पाकिस्तान जो उन्हनि खे पाण खे बि यकीन न हूंदो आहे छो हुननि जी 2-3 सालनि जी कुल पॉलिसी हूंदी आहे शॉर्ट टर्म जी। पहिरियों कमु था कराए छॾनि पंजाब में पोइ इहे रोड वोड ठही वेंदा उन्हनि जा पंहिंजा इहे सॼा गुदाम ठही वेंदा रोड पंहिंजी पटियूं पइजी वेंदियूं उन्हनि जूं जॉब्स उन्हनि खे मिली वेंदियूं। इहो बाक़ी पोइ असांजो कमु जॾहिं थियो सो थियो पोइ वरी ईंदो ख़ैबर पख्तूनख्वा जो नालो उन्हनि जो एजेंट नंबर 2 वरी पोइ वीचारा असां सिंधी या बलोच हिकिड़ो इहो त माना जेको मेजॉरिटी पैसा उन्हनि घणा पंजाब खे ॾिना आहिनि। ॿियो इहो त पहिरियों कमु पंजाब में शुरू करायो अथऊं। नंबर 3 इहो सॼो जेको बि कॉन्ट्रैक्ट ठहिया आहिनि बिड्स थियो प्लानिंग थी उन सॼे में हिकिड़ो त ज़ाहिर असांजा हूअं ई MN MP एजेंट आहिनि पर पोइ बि उन्हनि कंहिं जी का बि इनपुट न आहे। सॼो सेक्रेटरीयल लेवल ते मिनिस्टर लेवल ते एग्ज़ीक्यूटिव जेकी ब्रांच आहे गवर्नमेंट जी सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स उन्हनि खां दे हैव दोज आर नो इनपुट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और फ्रॉम द पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुझु बि न आहे। और all the bids and projects everything has been a secret goal. It's like a military secret. No debate. कंहिं बि फोरम में का डिबेट न थी आहे रुगो पंहिंजा वीचारा NGO वारा कुझु अली हाणे बहितरीनु आर्टिकल लिखियो आहे ख़ालिक जोणी जे साहब हुन फॉरेन पॉलिसी जर्नल में
उन लिखियो अथव, मां उनजी कुझु पॉइंट्स कोर्स करे रहियो आहियां। त हाणे इहो त नो पब्लिक डिबेट, ऐं जेके बि कॉन्ट्रैक्ट्स थिया आहिनि उहे ओपन न आहिनि, कंहिंखे का ख़बर कोन्हे। ॿियो, तव्हां जेकॾहिं चाइना जी जेके बि प्रोजेक्ट अफ्रीका में थिया आहिनि तव्हां ॾिसंदव त उहे तमामु एक्सप्लॉइटेटिव नेचर जा रहिया आहिनि। हाणे उहे छा कंदा आहिनि, पहिरीं ॻाल्हि त पंहिंजा मज़दूर आणे करे NLC जा इहे ट्रक्स हूंदा आहिनि, उन में 50-50 चाइनीज़ रहाईंदा आहिनि, लोकल। हाणे ॾिसो, अमेरिका बि पंहिंजा प्रोजेक्ट करे थो, इटली बि करे थो, UK बि करे थो, हर कोई करे थो मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते, पर उन में को ह्यूमन राइट्स जो कंसिडरेशन न आहे, का लेबर प्रैक्टिसिस न आहिनि ILO जूं, कुझु बि न आहे। तव्हांखे चाइना जी त ख़बर आहे कीअं ह्यूमन राइट्स खे हू जेको आहे लिफ्ट ई न ॾींदा आहिनि। त हिकिड़ो त उहे जिते जिते विया आहिनि उहो को लोकल लेबर कोन था यूज़ कनि, माना एज़ यूजुअल या त पंहिंजो चाइनीज़ यूज़ कंदा या वरी पंहिंजो पंजाबी यूज़ कंदा। त इहो बि प्रोजेक्ट जेका हाणे 6 मिलियन 7 मिलियन या 20 मिलियन जेके बलूचिस्तान खे मिलनि था, उन में बि अधु जेको आहे पघारुनि में हलाया वेंदा चाइनीज़ ॾे ऐं पंहिंजो पंजाबीनि ॾे। ठीकु आहे, हिकिड़ो इहो। ॿियो इहो त जॾहिं चरे बि अहिड़ा इकनॉमिक कॉरिडोर ठहंदा आहिनि, उन में छा थींदो आहे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं फार्मर जी तव्हां बनी खई, कंहिंखां तव्हां का ट्राइबल लैंड खई, उन्हनि खे तव्हां मार्केट वैल्यू में कंपनसेट कंदा हो। पाकिस्तान में आहे ई कोन। पाकिस्तान में तव्हां चवंदो हे 2 लख थी खण त खण, हलियो वञ, न त असां ठाहींदासीं तो रोड हितां। ऐं तक़रीबन जेके बि इकनॉमिक कॉरिडोर जा जेके प्लान्स आहिनि उन में का परवाह न कई अथऊं, ऐं जेके बि उन्हनि जेको टर्म्स एंड कंडीशन्स ख़बर ई कोन्हनि, पर जेके बि उहे पैसा ॾींदा उहे यकीननि तव्हां ॼाणियो मतिलबु पंहिंजी हट धर्मी सां पंहिंजे हिसाब सां ॾींदा, माना फेयर वैल्यू न हूंदो। त जेकॾहिं लोकल माण्हू हुयो, कंहिं नंढड़े ज़मीनदार या कंहिं नंढड़े बनीअ वारे खां तव्हां बनी खसियो था, हुनखे रोड ठाहियो था, त तव्हां हुनखे मार्केट जो वैल्यू त न ॾींदव न। हिकिड़ो इहो। अच्छा, ॿियो आख़िरी पॉइंट, मां 3-4 पॉइंट इहो थी वियो। आख़िरी पॉइंट उहा आहे त जेकी बि इन में जेकॾहिं डिस्प्लेसमेंट थी थिए पंजाब में, ऐं ज़ारा कुझु बनियूं ठहनि थियूं, इहे रोड ठहंदा, गोदाम ठहंदा, त माण्हू निकिरनि था, पर हुननि जा ॻोठ तबाह थींदा, पंजाब में बि तबाह थींदा, ख़ैबर पख्तूनख्वा में बि तबाह थींदा। ऐं एज़ यूजुअल तव्हांखे ख़बर आहे तारीख़ में तरबिला डैम, रावल डैम जी जेकी हिस्ट्री आहे जिते बि, त इहे सभु लोध जो लोध असां वटि ईंदी सिंध में। डिस्प्लेसमेंट थियण खां पोइ उन्हनि खे जेको आहे पैसा जेके बि मिलंदा 2-3 लख वीचारनि खे, ईअं त थी सघंदो पंजाबियुनि खे वधीक ॾियनि, पर जेको बि आहे पर उहो ईंदा असुल अची सिंध में, वरी उहा डेमोग्राफिक्स असांजी ख़राबु कंदा। सो इहो समरी आहे। सो इन समरी घणा पैसा पंजाब खे था मिलनि, पहिरियों कमु पंजाब में थो थिए, पब्लिक सेक्टर जी मर्ज़ी कोन्हे, ऐं ॿियो जेको आहे लेबर प्रैक्टिस ऐं ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसिस हिन में आहिनि कोन, कॉन्ट्रैक्ट खुफ़िया आहे, को उन जी तफ़सील कंहिं अवाम खे ख़बर कोन्हे, ऐं जेकी डिस्प्लेसमेंट थींदी न उन्हनि खे प्रॉपर कंपनसेशन थींदी, न उन डिस्प्लेसमेंट में सिंध ऐं बलूचिस्तान खे सभिनी खां वधीक नुक़सानु आहे। सो इहे चई लफ़्ज़ मां पंहिंजो जॻह वठंदुमि। महिरबानी सगीर, महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी। ऐं हाणे टियों सेशन शुरू थींदो, जंहिंजे लाइ मॉडरेटर आहे डॉक्टर हिदायतुल्लाह भुट्टो। ऐं ख़ैर गुज़ारिश कंदुसि त अचे ऐं अची पंहिंजो सेशन। उन खां पहिरीं जो असां इन सेशन जी शुरूआति कयूं, ऐं गुज़ारिश कंदुसि सभिनि दोस्तनि खे त महिरबानी करे वेही रहो, त जीअं पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं असां। ऐं उन खां अवल जो असां ही टियों सेशन शुरू कयूं, ऐं गुज़ारिश कंदुसि अदी हुमेरा सूमरो खे चेयरपर्सन ऑफ ISWO to announce one of our event, which is a cultural event, joint event, Ms. Humaira Sumro. Assalamu alaikum. Dear friends, all I want to say is very briefly that we just wanted to announce our function, the Cultural Day event that's being held on the 3rd of December. So I'd just like to invite you all from now on, so you could put in your diaries and make amendments and postpone any other things that you had to do. And this is going to be held on Saturday, 3rd of December. And as we did it last time, it was in collaboration with World Sindh Congress and Sindhi Doctors Association and ISO. This time we're still doing the same. And I'm hoping this time we will have even more audience. Last time we had quite a good turnout and everybody really enjoyed the event, and we are still trying very hard to keep up with that tradition, to keep everybody entertained and bring all the culture to you.
I'm hoping that you'll all come. This time the venue is a little bit different. It's same Ryan Banqueting Hall, but now they've actually moved to Romford. So this will be in Romford, and the time's now changed from afternoon to 5, and it will be from 5 o'clock to 10 in the evening. So probably a bit easier for people to mobilize and get there, as our Sindhi community is a bit lazy. They don't wake up early and they don't get there in time. By the time our function's ending, they're turning up and then they don't want to leave. So this time we thought, okay, we'll give them enough time to wake up, get ready and be there. So I hope you'll all be there, and we'll join in the fun and the culture. Thank you so much. Mehrbani, Adi Umera. There is one poetry I will like to say. This poetry is for Gumshuda Log, and this is one of our friend who has done this one. This is in Urdu. वो गुमशुदा तू गुमशुदा मैं गुमशुदा ये गुमशुदा सब गुमशुदा हम गुमशुदा लोग हैं कि गुमशुदा वक्त को गुजरना है वक्त कब गुजरता है पट्टियां हैं आँखों पर शोर है जहाज़ों का और सब आवाज़ें हैं नींद में रिहाई है जाग में जुदाई है ये तेरी कैसी दुनिया है कैसी ये खुदाई है गुमशुदा गुमशुदा ये गुमशुदा वो गुमशुदा तू गुमशुदा मैं गुमशुदा सब गुमशुदा हम वहाँ हैं जहाँ से खुद हमको भी कोई खबर नहीं आती कोई खबर नहीं लाता कोई खबर नहीं देता सारे जहाँ का दर्द बस उनके जिगर में है कोई खबर नहीं लिखता कोई खबर नहीं देता जो हमारे प्यारे हैं आँखों के तारे हैं जिंदा हैं या मुर्दा हैं आँखें हैं कि राहों पर जो तकती दीवारों पर या कोई आया अभी ना कोई नहीं आया गुमशुदा बस गुमशुदा खोलियों सलाखों पर दर्द खौफ तनाई मौत से भी बदतर है मूछें हैं जलादों की तेल कितना पीती हैं खून कितना पीती हैं ये वर्दियां जलादों की सर्दियां जलादों की बेदर्दियां जलादों की लोग हैं कि गुमशुदा वो कि मेरा भैया था वो कि मेरी बहना थी वो कि मेरा बाबा था वो कि मेरी मैया थी वो कि मेरा सैया था वो कि मेरा प्यारा था वो कि मेरी प्यारी थी वो कि मेरा बेटा था वो कि मेरी बेटी थी घर से यूँ निकले थे लौट कर नहीं आए वो कि मेरा बचपन था वो कि मेरा जोबन था वो कि मेरा साजन था वो कि मेरी प्यारी थी लौट कर नहीं आए आसमां खा गया या ज़मीन निकल गई गुमशुदा नाम क्या भला उनका काम क्या भला उनका लापता लापता गुमशुदा बस गुमशुदा एक सिपाही जाते हैं एक सिपाही आते हैं दिल फड़फड़ाने लगता है जब दरंदे आते हैं न कोई कचहरी है न कोई पेशी है न कोई छुट्टी है न कोई मुलाकातें न कोई मुनसिफ है न कोई वकील अपना न कोई दलील अपना न कोई रिहाई है दुहाई है गुमशुदा बेन करती माएँ हैं बेनिशां कब्रें हैं सरफरोदा लाशें हैं धुंधली कोई यादें हैं गुमशुदा बस गुमशुदा मैं गुमशुदा तुम गुमशुदा हम गुमशुदा सब गुमशुदा Now we will start our session. I will request Mr. Peter Thachel. Mr. Peter Thachel is a distinguished human rights activist. He has been leading global justice, democracy, LGBT. He has been one of the active supporters of Sindhi and Baloch rights in Pakistan as well as internationally. Mr. Peter Thachel, thank you very much for allowing us. From there or here? Yeah. As a human rights defender, I bring you solidarity in your struggle for justice and freedom.
Your battle is a battle that is replicated all over the world by many oppressed peoples and nations who have been victims of colonial era boundaries and carve-ups and are still living with the consequences of that era of imperialism. As we all know, today the situation in Sindh is worsening in the wake of the China-Pakistan economic corridor and the bid to enforce that upon the people. The state, coinciding with CPEC, has unleashed ever more violence against Sindhi political activists. In August, there was a widespread operation conducted by the Rangers, which involved encircling and invading scores of villages and towns, storming into hundreds of houses, ransacking property, humiliating and threatening residents, including women, children, and the elderly. In addition, many activists were seized. Since then, since August, at least half a dozen more Sindhi political activists have been kidnapped and abducted. They've disappeared. In the last few weeks, the tortured bodies of 2 young Sindhi men were discovered. This is the picture that is taking place, and yet so few people, even in other parts of Pakistan, let alone the rest of the world, realize what is going on. The violence against religious minorities continues unabated. Sindhi girls as young as 5 or 15 are being forcibly kidnapped, converted to Islam, and married off. The last such incident occurred only a couple of weeks ago. The systematic neglect and marginalization by Islamabad has brought economic impoverishment to the people of Sindh, which is confirmed by all the reports from the United Nations and other international human rights and NGO organizations. We know that about 75% of Sindh's population live in poverty, 70% suffer malnutrition, and more than 7 million children under the age of 10 are not in school. Moreover, Sindhi people are being converted into a minority within their own homeland. The government of Pakistan admits that there are more than 6 million illegal immigrants in Karachi alone. More than 6 million. So people from outside of Sindh are being settled there in a deliberate attempt to outnumber the indigenous Sindh population. Hundreds of thousands of acres of land have been seized and misappropriated from the rightful Sindhi owners. Many of the natural resources of Sindh are being expropriated by Islamabad, and only a fraction of their true wealth is being reinvested in Sindh. Now, in terms of how we move forward, you will be the ones to call the shots, but I just want to give you some observations which you perhaps might wish to consider. I think a very useful example, not the only one, but a useful example, is the struggle of the African National Congress of South Africa against the apartheid regime. The success of that struggle was predicated on 2 fundamental ingredients. Firstly, the ANC made it their objective to create the broadest possible coalition against apartheid, to build an alliance of everyone possible who could be persuaded and convinced that apartheid had to go. And that meant bringing together people who did not normally see eye to eye. But for the greater good, they united under the ANC umbrella to project and push forward the successful anti-apartheid struggle. The other element, of course, was the Freedom Charter. The ANC devised a Freedom Charter which set out the key points of its struggle and its aspirations for the kind of post-apartheid society it wanted to create. In other words, it had a blueprint to offer the people.
This is what we stand for. This is what we shall do when we overcome apartheid. And I think those two fundamental ingredients, a broad coalition or alliance and a freedom charter, are ideas that are transferable to all liberation struggles, to all oppressed peoples and minority nationalities. So I would suggest that one way forward is to create within Pakistan a new united front of the Sindhis, the Baluchas, the Pashtuns and other minority nationalities, to bring them all together in one single united front, which can coordinate the struggles, which can build bridges and communicate and coordinate between the different peoples who have grievances against the Islamabad regime. That to me is a pretty fundamental element of a successful struggle. It means working together with others who perhaps you may not otherwise agree, but doing so for the bigger, greater cause of everyone. The second thing is the need for a common program, a set of ideas about what Sindhis, Pashtuns, Baluchas and others want. The kind of post-Pakistan society you envisage. How you want to see that society exist. What kind of constitution, what kind of relationship between the different minority peoples. And of course the principles of democracy, human rights and social justice. But I think the biggest and most significant demand of that common program probably should be the demand for a referendum. The simple demand that Pakistan holds a referendum to let the people decide whether they want to remain within Pakistan as it is, whether they want genuine and really meaningful federal autonomy, or whether they want independence. The demand for a referendum is the single most important and most unifying demand that all the different nationalities can pursue. I think then, of course, you need to find a way of making that happen. And that will require a great deal of pressure on Islamabad. I think it means that as well as having the program with the central demand of a referendum, the united front of Sindhis, Baluchis, Pashtuns and others needs to also begin a coordinated campaign of mass protests all across Pakistan. So instead of having protests just within Sindh or Balochistan or the Pashtun areas, coordinated protests simultaneously across the entire country. And this may involve, for example, taking on board the ideas and methods of the struggle for Indian independence, the Gandhian struggle of non-violent direct action and civil disobedience, using tactics like rent and tax refusals, mobilizing the trade unions for general strikes. In other words, mass protests coordinated simultaneously across the country to make Pakistan ungovernable, to make the rulers realize they can no longer hold together these peoples without their willing consent. To make a nation ungovernable is the key to forcing those in power to come to the negotiating table and to agree serious demands and serious solutions. So those are just a few ideas which I throw out for your consideration, but you, of course, are the people who must make the decision. Destiny is in your hands, not mine or anyone else. All I say is, look and listen from other successful liberation struggles around the world, in particular the struggle of the African National Congress of South Africa. One thing I do know is that the Sindhi people struggle for
democratic and human rights, including the right to self-determination, is a legitimate resistance tactic against political, economic, and cultural oppression. One day, the oppression of Sindh will be history. One day, the people of Sindh will triumph. Self-determination and freedom for Sindh has been long delayed, but it cannot, must not, and will not be denied. Thank you. Thank you, Peter Thachel. Peter always gives valuable suggestions, valuable guidance. 75% people live under the poverty line. 7 million children did not see a school yet in Sindh. And he has always guided us and given valuable suggestions. Thank you, Peter. समय आया सिंध में नवा नादर शाह काने का तारीख़ में वेड़ सवाए बी वाह मता सोचो सा मता मोटो मागहा. Now my next speaker is Mr. Fernando Burgess. Mr. Fernando Burgess has been our supporter since a long time and mainly in the United Nations. Mr. Burgess is a program coordinator at Unrepresentative Nations and Peoples Organization, which is called UNPO, which are not represented in the United Nations, those nations, which strive to help to unrepresentative nations to achieve statehood status. And he is from UNPO, Mr. Fernando Burgess. Thank you very much. My name is Fernando Burgess. I am program coordinator at UNPO, and I am here today representing the Secretariat of UNPO. In pursuit of peace for the peoples and respect for universal human rights, these representatives joined together on the steps of the International Court of Justice in a pact for world peace. The result of this idea was the establishment of the UNPO, which is as relevant as it was, is as relevant today as it was 25 years ago. UNPO provides a path to advocacy on the international stage for nations and peoples that have been excluded from regulatory international bodies. UNPO interacts on behalf of its members with both regional and international organizations. Our efforts are aimed at raising the issue of marginalized nations and the importance of the right to self-determination, as well as the preservation and promotion of minority cultures, languages, and traditions. Because the plight of the West Papuans, for instance, occupied by Indonesia, or the case of the Haratins in Mauritania, plagued by slavery, or the Hmongs, deeply marginalized in Laos, just to pick randomly pick three members of UNPO, they might look unrelated, distant cases. But they are not. In fact, they are part of the same side of history, a history of exclusion, exploitation, and marginalization. One sad example of how interconnected the suffering of oppressed nations can be is CPAC. Starting from Xinjiang or East Turkestan, home of the Uyghurs, occupied by China, the project cuts through the UN disputed territory of Gilgit-Baltistan before reaching Sindhi and Balochistan. I think CPAC is, from the perspective of the oppressed peoples, is a real-life metaphor, a sad one, but a real-life metaphor. Two tiny elites, the Chinese Communist Party and the military establishment in Pakistan, advancing their own interests at the expenses of the peoples, stepping on lands that are not theirs and looting resources that are not theirs. Although the members of UNPO have different backgrounds, different cultures, and come from the most diverse parts of this planet, they all share a common condition. They are oppressed nations and peoples that fear loss of identity.
oppressed nations and peoples that struggle against cultural assimilation imposed by dominant ethnic elites. Oppressed nations and peoples that want to be seen and heard. I am here today to extend the solidarity of UNPO to the Sindhis, one of the oldest nations in the world. As you know better than I am, the Sindhis fulfill every single aspect of what makes a nation. The Sindhis have inhabited the same land for thousands of years. They have a distinct language and a distinct cultural heritage. Beyond all that, the Sindhis embrace values and are proud of them. I study, as part of my studies, I had a postgrad certificate in nationalism studies, and I read a lot about theories on nationalism and theories on the nations. And while I was thinking about today and reading and thinking about you, your cause, there were two things I read back then that I would like to share with you. There is an academic who says that the existence of a nation is an everyday plebiscite. It's a perpetual affirmation of life. I think this is beautiful because it's a project you cannot give up. You have to be there every single day. It's an everyday plebiscite. I like this idea. And the second idea that I would like to share is that any good anthropologist can say can identify an ethnic community. However, the difference of a nation and not merely ethnic community is that a nation is self-aware. A nation is self-aware of its uniqueness. And this is what I feel, and this is what I read, and this is what I hear about the Sindhis. And this is what I think you should be proud of yourselves, and UNPO would like to extend solidarity. Thank you very much. I know UNPO has helped and supported a lot of nations who were on the other side and now has gotten status, and I hope that with our solidarity, with our unity, we will go and one day our nations will be free and sovereign. Anya ta rid gaje gaje acho ta kuj kaje kaje anya ta ka ta pya khajan anya mot jo pya puchan anya b kos pyo hale anya b bhui thi jale anya b kandha pya kiran anya b lal pya maran anya b sindhdi luche anya b ko natho kuche anya ta rid gaje gaje acho ta kuj kaje kaje अव्हां जी माउ सिंधड़ी अव्हां जी उन सां जिंदड़ी ॾिनी उन्हीअ खे ज़िंदगी उहा ई अव्हां जी बंदगी अव्हां अमर खे रत ॾिनो सदाईं पंहिंजो सथ ॾिनो सदा अव्हां खे सार जे ऐं सिंध खे जियार जे अञा त ऋण गजे गजे अचो त कुझु कजे कजे अचो त कुझु कजे कजे. Now our next speaker is from Afghanistan, and Dr. Zakir Saad Dutt. Dr. Zakir Saad Dutt belongs to Unity Afghanistan Movement UK, and he has been a great supporter of oppressed nations in Pakistan. Dr. Zakir Saad Dutt. Today we have the opportunity to talk about the same effects and the same injustice which is going to be decided by only one tribe. I'm not blaming all Pakistan. In Pakistan, there's a lot of different tribes, but there's the only one, they are Punjab. We cannot even give him that name of Pakistan. There's only Punjabistan. Whatever, I'm not going to be deeply on details to that one. About the Sindh and the Sindhish freedom. That was the first time when I was heard, like last year, there's a group working here, and that have been introduced to me through Mr. Harbiar and Khan of Kalat, which is, they are struggler of freedom for Balochistan. I'm very so happy that now, as you know about our names, that called Unity, historical movement of Afghanistan.
which was that goes back to the actual history of Afghanistan, when the Pakistan was not given birth and justice on the land of others. Mostly of my aims and talking was actually covered by Mr. Peter. I'm glad to hear that from him. We were supposed to loud and louder put our voice up to the Congress of US, which is we did in the past. But mostly we have been ignored, which is very painful. And similar, we have been invited 3 times to find a solution for the bleeding which is going in that region. Our Sindhi brothers and sisters affected. Our Baloch brothers are being affected. And we are mostly affected from nearly the day when they created this country on the name of Pakistan on the different people land. I very appreciated the struggling of those people who have struggled until now for the freedom of Sindhi. We are next to you, shoulder to shoulder, for any steps of freedom what you think about, to have a justice for Sindhi. I will call you similar as you, J. Sindh. We are also struggling. The organization we was started like 5 years ago. The international conference we have called here in the UK, and the cause of that international conference was to put a tent of all the people who was now sitting next to me. They should coming and hearing our voice. The anti-Durand line, injustice imposed line, which was divided as same brothers in 2 parts. We are same language, from same father and mother. We have the same religions. We don't have any difference. But now 35 million is one side and 35 million is another side. They force them to call them Pakistani, but they are not happy. Why should be they Pakistani? The country who do not have this own etonyms, national etonyms in his language, which proud? They should be called them their own Pakistani. There's no any proud of that. The country is who's created by someone, as Mr. Peter was covered that. The type of imperialism or apartheid, there's not anymore that time. That time is gone. We have to stand up. We have to put our voice louder, as I repeated before. This is the time. Pakistan has been choose themselves this route. And the economic corridor, which is the before talk about, we have always given that suggestion also to China. Be careful. If you're going to make a deal, you have to make a deal with the owner of the land. Punjabi is not the owner of this land. So many, from the duration of Mr. Pervez Musharraf, who is sitting here as the biggest criminal, but he's still living here, and nobody get him to the court. Nobody asked him. We have to stand up against him. And duration of him, I remember that Dr. Safdar was also kidnapped. Even the United Nations, I think that they were asking about the result of the, they should be provided the medical attentions, which is Punjab has been denied because they have been killed. How are they going to give you that? On the name of terrorism, we have been, from past 15 years in Afghanistan, affecting, and international forces are present there. They are going to fighting village by village, and they are killing my innocent people in Afghanistan mostly. And the terrorist provider or proceeders
And the in charge is ISI of Pakistan. That's not Afghanistan. Bin Laden was not in my country. He was living next to the military base in Abbottabad. Why UK, US, and United Nations was closing the eyes on them? Why did not ask them, how come that? In that 400 yards or like 500 yards far from the military base, he was living there almost so many years. I'm calling from this stage, from your stage, I'm proud of all of you who are struggling for freedom from Punjab. I'm calling from here for those Pashtuns who is living there and still they are working as a slave of Punjab. Shame on you. Shame on you if you're going to be misused against my Sindhi brothers. Shame on you if you're going to be used against my Baloch brothers who's going to be struggling for their freedom. And shame on you that you don't know your history and you cannot stand up for your own freedom and you're going to be fighting for Punjab in Kashmir, fighting for Punjab project in Palestine, and that Punjab was killing 20,000 young generation of Palestine who was fighting for freedom. You should wake up. You should look at your history. This is the time we have to stand up shoulder to shoulder to our Sindhi brother, to our Baloch brother. If anybody is standing next to Punjab, they are our enemy. Thanks for time. Thank you, Sada. थी मैखाने ते माक वसे के रिंद कड़ो खड़काइन था थी मैखाने ते माक वसे के रिंद कड़ो खड़काइन था कुछ गाट गहर मां छिरकन था के जाम झले वाझाइन था के पंहिंजे भव में भुणकन था के काया राथी कुणकन था तो चोरे चंग अयाज़ उते जिते ॻाढ़ा गभरू ॻाइनि था थी मैखाने ते माक वसे के रिंद कड़ो खड़काइन था के रिंद कड़ो Now, our next speaker is Mr. Ragveer Singh Sodho. He is the human rights activist, traveled from India. Mr. Sodho is a human rights activist in Jodhpur in India, and he is the Indus Valley Research Institute from Delhi. Dr. Sodho is a lead Jodhpur chapter. He is actively involved in supporting recent Sindhi migrants to India from Sindh. Mr. Sodho was born in Umarkot, Sindh, and studied in Sindh University, Jamshoro. He graduated and done masters in 1983. He is currently as an interpreter, and he moved to India in 1993 to Jodhpur, and he is a great supporter of our nation. Mr. Ragveer Singh Sodho. मां जोधपुर में रहां थो जिते ट्रेन हले थी कराची मां ऐं जोधपुर अचे थी जोधपुर मां हले थी जेका कराची वञे थी ह्यूमन राइट्स जी कंडीशन इहा आहे हुन ट्रेन में ईंदड़ एवरेज तव्हां 400 खां 500 माण्हू या लेडीज़ अचनि था ऐं हुननि मां 20% माण्हू उते ई सेटल थियनि था जोधपुर में या हिंदुस्तान जे ॿिए पासे में बाक़ी हुन मां बाक़ी कुझु रेकी करणु अचनि था कुझु माइटनि सां मिलणु अचनि था इहा एगनी जेका आहे सा इहा माइग्रेशन शुरू थी आहे 40 खां वठी 1940 में जॾहिं खां ई नालो पियो आहे अलाए छो दोस्त अवॉइड कनि था नालो घणो करे अवॉइड था कनि छो त शायदि वापसि वञण जो हूंदो आहे मूंखे फ़िलहालु कोन्हे इन करे आउं वठां थो हुन पाकिस्तान जे नाले सां इहा माइग्रेशन शुरू थी आहे जेको अञा ताईं हर हफ़्ते हलंदड़ ट्रेन जेका आहे हुन मां माण्हू अची सेटल थियनि था ऐं हुननि माण्हुनि में कुझु एतिरा ग़रीब हूंदा आहिनि जिन्हनि खे मुख़्तलिफ़ NGOs जेके आहिनि से कैंपुनि में रखनि था
उन्हनि जी खाधे पीते जो बंदोबस्तु कनि था, पोइ उहो पंहिंजे लिखे अची केॾा मूव करणु चाहिनि था, नथो अचे। सो पंहिंजो जेको आहे हुन मां 20% माण्हू हुते सेटल थियनि था ऐं मुख़्तलिफ़ कैंपनि में रहनि था। उन्हनि कैंपनि जो NGOs आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके बंदोबस्तु कनि था। हाणे अॻियां अलाए केसि ताईं हलंदी ऐं छो थी हले पई, छाजे करे थी हले पई, हुन नाले जे करे हले थी, त अञा ताईं छो थी हले। अञा जेके सॼी दुनिया जा ह्यूमन राइट्स वर्कर्स जेके आहिनि से ऑर्गेनाइज़ेशन जेके आहिनि से हुन जे लाइ कुझु बि अञा करे कोन सघिया आहिनि। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन त शायदि हिन ॻाल्हि खे रिकग्नाइज़ कोन थियूं कनि त हेॾे वॾे तादाद में हर हफ़्ते इन एवरी ट्रेन people are moving to India from Sindh, not from any other province, because if coming from Afghanistan or Balochistan, they are coming from other routes, not from that train. That train is only bringing Sindhi people to Hindustan. And here migration जेका आहे सा कीअं बंदि थींदी कॾहिं बंदि थींदी ख़बर न आहे। ॿी ॻाल्हि त सिंध में पाण जेकॾहिं कंपेयर करण जी कोशिशि कयूं त मुंहिंजा जर्नलिस्ट ॿाहिरि वेठा आहिनि, हुननि ॾाढो सुठो एक्सप्लेन कयो, पंहिंजो फ़र्ज़ु तमामु बख़ूबी जेको आहे निभायो। त तव्हां जेकॾहिं कंपेयर कयो त थर में पाण चऊं था त का शइ डेवलपमेंट कान्हे, ऐं हुन थर खां राजस्थान जे पासे जेकॾहिं तव्हां ईंदव त उहा थर हुन खां बि तक़रीबन ओड़ी आहे या हुन खां थोरी वधीक ख़तरनाक हुई, पर हुन थर में हाणे 2 मुख़्तलिफ़ नदियुनि जा पाणी हुन थर में पहुची चुका आहिनि ऐं तक़रीबन हर घर खे हर ढाणी खे तक़रीबन रोड आहे ऐं पाणी जो बंदोबस्तु आहे हुननि जो हर ॻोठ में, हर इवन ढाणी में, जेकॾहिं विच में लाइन में जेको आहे ढाणी आहे। ढाणी चवंदा आहिनि हिकु ॿ पाड़ो जेको आहे हिकिड़ो किथे पंहिंजी ज़मीन में वसी पए, न उहा तरक़ी थी आहे। ऐं अदी भावना जेका पिक्चर ॾेखारी जेका नॉर्थ ईस्ट साइड आहे सिंध जी, हुन खां पोइ जेको भुज आहे, हुन भुज में बि तव्हां ॾिठो हूंदो त रोड बि आहे ऐं बिजली जूं तारूं बि आहिनि, ठीकु आहे। पर असां वारे पासे सिर्फ़ु 2 रोड आहिनि जेके आर्मी जे वञण लाइ आहिनि। माण्हू ईअं न सम्झंदो असांजी सहूलियत जे लाइ ठाहिया आहिनि, जेकॾहिं हुननि जी सहूलियत लाइ हुजनि हा त विच में कनेक्शन ॻोठनि ॾांहुं बि हुजे हा। ऐं हिन पासे हाणे लाइट जे करे ट्यूबवेल थी विया आहिनि, माण्हुनि खे ॿनियूं आहिनि, इवन पाणी एतिरो वेझो थी वियो आहे उन्हनि ॿिन्ही पासे, जेका हिकिड़ी राजस्थान कैनाल अचे थी, ॿिए पासे गुजरात मां नर्मदा जो पाणी जेका असां हुननि लिफ्ट करे मथे एग्रीकल्चर लाइ ॾियनि था बाड़मेर ताईं। बाड़मेर यानी कि पंहिंजे छाछरे जे साम्हूं वारो हिसो, छाछरे खां ईस्ट जेकॾहिं पाण वेंदासीं त उहा बाड़मेर ईंदो। जैसलमेर जेका आहे सा रहीमयार खान ऐं घोटकी ॾैरकी जे साम्हूं अचे थो, हुन में ॿिन्ही में इहे 2 नदियूं अची चुकियूं आहिनि, पकियूं कैनाल्स आहिनि, उनखां पोइ वाटर कोर्सिस आहिनि, उते जेका आहे उहा आहे इहा तरक़ी। अच्छा, हिननि टिनी जायुनि ते हाणे ॾिसो, जेकॾहिं पाण सिंधी मुस्लमान जी ॻाल्हि कयूं त सिंधी मुस्लमान हिकिड़ो थर में वेठो आहे जेका पंहिंजी थर आहे, ॿियो सिंधी जेको आहे सो वेठो आहे बॉर्डर खां हिंदुस्तान वारे पासे। हुन में तव्हां पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन ॾिसो, हादी जेकॾहिं दोस्त सुञाणींदा हुजनि, हिंदुस्तान विया बि आहिनि शायदि कुझु, हादी MLA रहियो आहे 64 जो, MLA माना प्रोविंशियल असेंबली जो मेंबर 64 जो। अमीन खान हुन खां पोइ वारो जेको तक आहे शिव जो बाड़मेर में, हुते जेको आहे सो रहियो आहे पंहिंजो अमीन खान MLA यानी कि प्रोविंशियल असेंबली जो मेंबर, राजस्थान असेंबली जो। हुन खां पोइ पीर साहब अगर या मुरीद आहिनि, जिन्हनि जो भाऊ साले मोहम्मद जेका आहे सा MLA रहियो आहे पोखरण जो। अहिड़े नमूने सां उते उहा रिप्रेज़ेंटेशन कंहिं वॾेरे खे कान मिली आहे, इहे इंतिहाई आम माण्हू आहिनि, थर जा माण्हू आहिनि, हुननि खे मिली आहे। पर असां वारे पासे शायदि आम माण्हू इहो सोचे बि नथो सघे, थर जेको माण्हू हा वॾेरनि खे ॿियनि माण्हुनि खे उते मिली सघे थो, कंहिं वॾी पार्टी जे वर्कर्स खे। हुन खां पोइ पंहिंजो दीपा ॻाल्हि कई त उते जेके आहिनि सिंधी वुमेन जेके आहिनि से वाक़ई उते सिंधी वुमेन, सिंधी यानी कि 47 आयल जेके सिंधी आहिनि अदावरनि सां जेके आहिनि, हुननि में ॾाढो शौक़ु आहे ऐं उहे ॾाढियूं अॻिते आहिनि। पर साॻी जॻह ते जेकॾहिं तव्हां बाड़मेर, जैसलमेर ऐं बीकानेर वारे पासे वेंदव त हुते वेठल जेके सिंधी लेडीज़ आहिनि उहे थोरियूं अञा पोइते आहिनि। पर हाणे हुननि स्कूलनि वञणु शुरू कयो आहे, मदरसा हुते बि हुआ, हुते मदरसनि ते काई बैन कान्हे, पर माण्हुनि में शौक़ु एॾो पैदा थी वियो आहे जो हाणे हू मदरसनि सां गॾोगॾु ॿारनि खे स्कूल जी जेका ट्रेडिशनल तालीम आहे उहे बि ॾियनि था।
या हुननि जी सुजाॻी जे करे आहे। उहा साॻी सुजाॻी असां वारे पासे शायदि आणण लॻो आहे। मूंखे घणो अर्सो थी वियो आहे, शायदि 25 साल थी विया आहिनि, ॿियो कोन आहे, पर मां अवेयर आहियां हुन पासे खां। त हुते तमामु नंढे पैमाने ते माण्हू पंहिंजे लेखे कोई स्कूल ॿारनि खे मोकिलणु शुरू करे त ठीकु आहे, पर सरकारी सतह ते अहिड़े वॾे पैमाने ॻाल्हियूं कोन थियूं आहिनि। आख़िर में मुंहिंजी नज़र में हिन जो हल हिकिड़े ई नारे में आहे। उहो नारो आहे साईं GM सैयद रहबर आहे, सिंधु देश मुक़दर आहे। हिन खां सवाइ ॿियो कोई हल मूंखे नज़र कोन थो अचे घटि में घटि। आख़िर में असां साईं जो पसंदीदा हिकिड़ो शेर आउं पढ़े ऐं पंहिंजी ॻाल्हि खे विराम ॾींदुसि। उहो आहे वठी हर हर जनम वरबो, मिठा महिराण में मिलबो, ख़तम थी वेंदी हूंदाई चिटी चांडाण में मिलबो। थैंक यू। बेमौत मुआ तो लाए कुठा, इंसान हज़ारें मान रुगो, हिन दुनिया में ए देस हुया नादान हज़ारें मान रुगो। जंहिं राह अजल कंहिं वरिती आहे, हिन भुई कई बि भरती आहे, ही धरती तोखे परती आहे, महिमान हज़ारें मान रुगो। तूं चओ न कुछां, तूं चओ न लुछां, पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां, तूं कंहिं कंहिंखे ख़ामोश कंदे, ऐलान हज़ारें मान रुगो। ही दौर अयाज़ गुज़रणो आहे ऐं पंहिंजो वारो वरणो आहे, को ॿारण नेठि त ॿरणो आहे, इम्कान हज़ारें मान रुगो। तूं चओ म कुछां, तूं चओ म लुछां। Our next speaker is Mr. Javed Mengal. Mr. Javed Mengal is a human rights activist from Balochistan, and he is son of the living legend of Baloch nationalist struggle leader Sayatala Mengal. He himself has struggled for the Baloch nation, and he is a Baloch activist, Mr. Javed Mengal. सभिनी में पहिरीं मां पंहिंजी तरफ़ां सिंधी कांग्रेस जा जेके ना उहिदेदार ॿार आहिनि उनखे मुबारक पेश कंदुसि, इन उमेद सां कि जीअं पहिरीं बि अवां सिंधी ॿारहीं असां गॾु साथ ॾिनो, हे मज़ीद असां सिंधी बलोच इतिहाद खे अॻिते मज़बूती से ॾींदा। अॼु सिंध और बलूचिस्तान जी हालत कोई ख़ासि फ़र्क़ु कोन हुजे। इहे हर ॾींहुं ॾिसंदा आहियूं सिंध में लाशूं पिया लाइन, बलूचिस्तान में असां अहिड़ो ॾींहुं कोन को जिन में लाशूं को त खणूं हुते। हिन मुल्क खे ठाहिण में असांजो तो हथु न हो वञो आहे। हिकिड़ी किसो ॿुधायां कि हिकिड़ो असां सेनेट मूव सां उते गुनाह इहो गुनाह में असां बि शरीक थियासीं, मेंबर ठहियासीं सेनेट जा। हिकिड़ी उते वेठा हुआसीं चेयरमैन चैम्बर में, सो उते उन ॾींहुं पाकिस्तान आज़ादी ॾींहुं फोटू हणी हुअं सॼे हिन हॉल में। सो वेठा चेयरमैन सी अजमल खटक मरूम सो बि हुओ असां सी। सो हिकिड़े पुछो चेयरमैन खे, चयो इहे फोटू तव्हां हणिया हिते छा लाइ करे? पोइ कासिम मलिक कासिम बि हुओ, वरी कासिम चए हीअ असां हणियासीं ते लाइ करे कि असां मुल्क काई क़ुर्बानी वरितोसीं, ते लाइ करे माण्हू हिनखे विसारनि मां। सो हुते अजमल खटक वेठो, उन उथी बीठो कि तव्हां छा अवां मुल्क ठाहियो हुयो छा? हिन में असांजो बि खून आहे, असां बि हिन लाइ उहो जदोजहद कीसीं। पोइ पठाण पाण थो चए मलिक अजमल खटक। सो मां पर चई सिंधी बि हिन ॾिनो हुए क़ुर्बानी, मां पर इशारो कयईं बलोची बि ॾिनो हुए। मां चयो खटक साहब, हमने ना कुर्बानी दी है ना हम उसका दावा करते हैं, हमें ज़बरदस्ती इसमें मुसीबत में शामिल किया गया है। तेरा करे हिन नेवागो मुल्क के हिकिड़े अंग्रेज़ी ठाहियो पंहिंजी मफ़ाद लाइ करे, तॾहिं रूस रहे हुन ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करण लाइ उहो बेस खपे। हुन ख़बर की इंडिया तालुकात ख़राबु थिया, हाणे कोन ॾींदो, ते लाइ करे हिनखे का त पंहिंजो एजेंट हुन ठाहियो हुनखे। सो तॾहिं करां उन ॾींहुं त वठी अॼु ॾींहुं ताईं असांजे मथां जेके बि ज़ुल्म हुन करणु चाहे करे पियो कंदो पियो वञे अञा ताईं। फ़र्क़ु इहो की असां वटि उन वक़्तु इंफ्रास्ट्रक्चर एतिरो कोन हुओ जीअं सिंध में हुओ। सिंध में हुन पकी पकाई रोटीअ खां सभु शइ तयारु मिली,
तिलक सिंध पहिरीं वञी उन कयो यलगार कयो पंजाबीअ सिंध जी जेके माल लुटियूं शुरू मां सिंध था कयूं असां वटि हू ई कोन कुझु असां वटि हू जो इहे अंडरग्राउंड जेके गैस हुआ सो वञी 58 में उन ते कढियूं मगर सिंध में जेको नेशनल खे काउंटर करण लाइ हुन ॿी हिकिड़े क़ौम खे अची सिंधी साम्हूं बीहारियूं सो साम्हूं सभु ॼाण केरु आहिनि सो हाणे वॾी ख़ुशी थी कॾहिं ॾिसूं न अहिड़ा लखूं जहिड़ा ॿार आहिनि जे क़ौमियूं उहा क़ौम कोन मरंदी जिन में शऊर ज़िंदो हूंदो अगरि क़ौम चे खरण जेकी क़ौम खरे थी इहा थी मरे को अगरि आवाम शऊर छो इनशाला केर बि धरती वान कोन ईंदो बाक़ी ॻाल्हि पे थिए सी पैक जे बारे में सी पैक असांखे बि ख़बर आहे की कीन लाइ पियो ठहे सी पैक ठहे पियो पंजाब लाइ पाकिस्तान जो मतिलबु पंजाब आहे पाकिस्तान त उन टुटो जहिड़ी बंगाल असली पाकिस्तान ठाहिण वारी बंगाल हुआ न बंगाली हुआ मेजोरिटी त इहे ई हुआ जेके आया हुआ हाणे त पाकिस्तानी नालो अलाए पाकिस्तान ॿी भला ठही हुई नाले इस्लाम जे का इस्लाम जी का शइ बीठो पियो पंजाबी मज़हबी पंहिंजो आहे छा नालो इंसान खे इस्लाम त ॾियो ॿियो नालो ॾियूं मगर हीअ असां सी न असूं हिन सी रही सघनि पहिरीं कोन ज़बरदस्ती असां हुन शामिलु कयूं पंहिंजे मुल्क में न अॻिते थी सघंदासीं हिन में त तंहिं लाइ करे असां कोशिशि करूं की पंहिंजे में जेके बि आहियूं जेके मज़लूम क़ौम आहियूं जिनखे हिकु ॿार चयो की जेके पश्तून सिंधी बलोच सभु मुश्तरक आहे इहा हिकु दफ़ा कोशिशि कई हुईसीं असां वालिद साहिब पूनम में कोशिशि कईसीं पूनम में छा छो आख़िर में जे सिंधी बलोच रहिया जेको पश्तून हुआ से हींअर वेठा पिया आहिनि गवर्नमेंट वेठा पिया आहिनि मुशरफ में जेके बलोच ज़ुल्म ज़ाती थियनि पिया थियूं ऐं अञा थियनि पिया हिन सां गॾु हुन सी पंजाबी सी पार्टनर आहे अफ़गानिस्तान हिकु जेके आहिनि पठान इन हर वक़्तु बलोची मदद की है वो आइंदा भी मदद चवनि पिया कंदासीं थैंक यू वेरी मच बाक़ी अक्सर हिते वेस्ट में इहो प्रोग्राम पाकिस्तान जे बारे में पिया कनि की न हिन खे जेके न्यूक्लियर हथियार आहिनि इहे मज़हबी जुनियूं इन हथ लॻनि मां इहो रबते लाइ की उन ब्लैकमेलिंग पिया अचनि हर वक़्तु अमेरिका को ब्लैकमेल थिए कॾहिं फंड कॾहिं बंदि करे वापसि ॾिएसि मगर हिकिड़ी ॻाल्हि मां सम्झ में कोन थी अचे पाकिस्तान पाण मञे पियो की रिसेंटली केरु छो इन वज़ीर दाख़िला छो वज़ीर ॿियो छो पंहिंजे आर्मी चीफ उन थी वियो की अगरि असांजे मथां कहिड़ी ख़तरो छो असां उन्हनि कोन टरंदासीं न्यूक्लियर इस्तेमालु करणु हाणे उन बावजूद बि अखियूं पाए बंदि करे वेठो पियो आहे न हुनखे कॾहिं फंड रोकेसि कॾहिं छॾेसि फंड खे मतिलबु ऑक्सीजन पियो ॾिएसि इराक ते उते विया हमिलो कयो इराक ते इराकी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन चे इराक वटायूं पाण ॿुधो हूंदो की टोनी ब्लेयर सो कयो की माफ़ी घुरी की न सभु कूड़ उतां उथी उते वञी हुनखे इराक खे तबाह करे आख़िर पिछो कोन मिलियो हीउ निभागो पियो चए मां वटि हीअ सभु हथियार आहिनि सभु इस्तेमालु कंदुसि उन जे बावजूद बि उनखे पियो ढील ॾिन उन पंहिंजियूं पिया मजबूरियूं आहिनि उन पाकिस्तान छा मगर मुसीबत इहो की उनखे अञा ताईं अमेरिका वेस्ट खे ॿियो को त मिले ऑल्टरनेटिव कोन मिले असूं पाण गॾिजी इहो ॾेखारियूं की असीं इन धरतीअ जा आहियूं इंसान असूं बि हिकिड़ी क़ौम आबादे पोइ शायदि उहो पंहिंजो उन जेको पॉलिसी लॉबी चेंज कंदो उन अलावा हे जे असांजी हालत ॾिसो था न को फ़र्क़ु अचंदो न ॿियो जे करे असूं हिंदुस्तान तरफ़ां बलोच
भाणी तरफ़ां इहो कोशिशि ऐं भाणी सिंधी भाटी इहो कोशिशि इल्तिजा कंदुसि की पाण जेको मांद जेको वॾो सिंधी फॉरम जेको ठाहियूंसीं इनखे वापसि अॻिते ॾिनई मुंज़म करूंसि पोइ अॻिते कीअं हलाए सघूंसि था फिर असांजा माण्हू पाण इलाही थोरा तो कोशिशि करूं की इहे पंहिंजी आवाज़ जेतिरो बि ॼाणे सघूं दुनिया खे ॾेखारणु इहो कोशिशि करूं महिरबानी सिंधु जितेश जिंदाबाद बलूचिस्तान जिंदाबाद मूं कातीअ हेठियां कंध ॾिठा मूं साणा साणा संद ॾिठा मूं छा माईअ लाल ॾिठा जे लोई ऐं लॼ बचाए विया जे जी जियारा माण्हू हा से सभ खां प्यारा माण्हू हा जिन साह ॾेई वेसाह ॾिनो से सभ खां पाण मल्हाए विया छा नारा हुया छा नींहं हुया हू मुड़ुस हुया या शींहं हुया जे डूंगर ॾेल ॾकाए विया गजगोड़ करे गरमाए विया आ कंहिं माण्हू मंझ मणिया मूंखे अहिड़ा मुड़ुस वणिया जे सारो जग जरकाए विया ऐं पंहिंजो पाण भुलाए विया हू प्यारा पतंगा खामी विया ऐं ॾूर केॾो उॾामी विया पर तुंहिंजी मुंहिंजी जोत में पंहिंजी जोत जमाए विया अॼु छूह उन्हनि जा छोलीअ में अॼु ॿोल उन्हनि जा ॿोलीअ में ए धरती तुंहिंजे झोलीअ में जे सूरे सीस छिपाए विया मूं काती हेठियां कंध ॾिठा मूं साणा साणा संद ॾिठा. Now I will request our final speaker of this session, Dr. Lakhu Lohano. He was the ex-chairman of World Sindhi Congress. He has presented our case and World Sindhi Congress in many fronts, including United Nations. I think everybody knows Dr. Lakhu Lohano. Honorable case, ladies and gentlemen. This conference is happening, and remember my words, this conference is happening in one of the most critical times, not only for Sindh, but for the region and for the globe. Before we make predictions, before we assess, before we do analysis, what is going to happen in future with the Sindh and Sindhi people, in terms of the resources, in terms of the sovereignty, in terms of the peace, in terms of the prosperity of Sindhi nation, let me look back, let me learn from the past and try to establish a pattern. We don't go very far, we go back to 1947 and just a period before 1947. We were told that there will be a new country, and that new country will bring prosperity and happiness. There will be rivers of honey and milk, and we need that. And do you know what happened? We all know, it's part of history. In the current value, literally trillions of worth of property of Sindhi people were handed over. Our cities become non-go area for Sindhi people. We become aliens in these cities. Sindhi language, the department in Sindh, the Sindhi language department was closed, and Sindhi people were shocked. What's happening? What is happening? And before we could realize, there starts period of 50s. They say there should be one unit. People like Saint G.M. Seth, Comrade Haider Jatoi, Qazi Faiz Muhammad, Saint Hafiz Qureshi, hundreds of people who opposed that. They said one thing. Number one, they are agents. They are agents of Soviet Union, they are agents of India. They put all them behind bars. Not only that, if you go back to that times, there are scores of articles. And these articles emphasize
Couple of things. Number one, those who oppose one unit, they are enemy of Pakistan. Not only they are enemy of Pakistan, they are enemy of Islam. Not only they are enemy of Islam, they are enemy of the development of Sindh. They are anti-Sindh development people. And in 1955, they established one unit. And what happened? As a result of one unit, the Kotri barrage or Ghulam Muhammad barrage, they give 2.3 million to people from outside. As a result of that, hundreds of thousands of people, they moved into Sindh. If you look at the figures of that time, because it's a one unit, it's common house of everybody has got the equal right. 90% of jobs went to outsiders, and that was the development that they were suggesting. And at that time, if you write Sindh, it was a punishable crime. Jenjalai Sheikh has cheo Sindhri tu jo now gido jarkari harate per pyo. To write Sindh, you are jailed. Saint GM, all that entire period, Saint GM said, Comrade Hadar Bajatoi, Qazi Faiz Muhammad, hundreds of people, they were in jail. They didn't accept that. And then, soon after, there starts the period. Look, there are a lot of floods. We have to save Sindh from floods. They built the dams. Dams brought floods of immigration. Can you tell anywhere, any other part of the Pakistan where the demography is such fragile as in Sindh? And they brought, of course they taken away floods, but they brought floods of immigrants. Kalabagh Dam, Tharbila Dam, and even the situation reached that now in Sindh, even the drinking water is getting scarce. Regardless, more than 90% people don't have access to drinkable water anyway in Sindh. Now it is CPAC. CPAC is not new. The first time we start hearing the word CPAC, it probably about 2004, that's 12 years ago, that it came to the open. They were talking about CPAC. It should have been underground, under consultation, for long before that. What is CPAC? It is not innocent. If it was innocent, then the entire powers of the world, they should not be interested to that intensity in that CPAC. China is interested, India is interested, US is interested, Russia is interested, Europe is interested. So what is that? What is CPAC? Now, we might already have heard of the Great Game, and that was the Great Game that went for last one and a half century, and that was access to Indian Ocean, access to warm waters. The division of Afghanistan was a result of nothing else but the Great Game. Zakir Sadat will know that. Durand Line was because of that Great Game. Even creation of Pakistan was a result of that Great Game. So what type of economic corridor is this? Number one, we don't know honestly. We really don't know everything about CPAC, because when it was asked in Senate that we want to see the details of CPAC, they say it is confidential. So if they cannot declare all the details existing at that time to the Senate, whatever is there, it may be a smoking gun. We really don't know. What few figures that we know is one thing, that
to protect that corridor, regardless it's east, west, central, whatever, there will be a security post every 5 kilometers. Every 5 kilometers, there will be a security check post. And they have given some details. So, okay, so there will be a security check post. Then there will be 10, 15 houses or settlements where people will be sitting to so that they can manage that. And then security of that corridor, of the road, will be monitored using satellite. I mean, this is the first economic corridor in the world which requires security monitoring. And what would happen if it happens? Based on our past experiences, they say it will create 700,000 jobs. 7 lakh. We know, based on our experience, even in the third, the 1,200 jobs that they have appointed people, there are only 69 or 71 Sindhi. That doesn't make even 10%. So how many jobs do we expect in these 700,000 jobs? Those people who think, wow, the distance between the traveling time between Jacobabad and Karachi will reduce from 8-9 hours to only 5 hours, and it will be 4-lane road. Wow, it's not wow. It's not wow. I've lived in the prison, and those who lived in the prison, they know that around us there are encirclement of the guards who keep eye on us. If this CPAC takes place, this will be the encirclement of entire Sindh. If you look at the road network, how they are doing, and all the projects that they are proposing, who will come into jobs? We know that. Already the most fragile demography anywhere in Pakistan is in Sindh. Not only in Pakistan, but look at the various other parts of the world. Nowhere an ancient nation is in such precarious condition as we Sindhis are. So what should we do? Now, because Sindhi movement have achieved against the odds, against this onslaught, against this terror, unbelievable goals, what have done? They have learned from it. And they say, talk on anything. I'm saying this based on my conversation with my friends. Talk on anything, but one, you should not talk on CPAC. Therefore, the mass awareness about the CPAC, those people who wrote about Kalabag Dam, who wrote about Thal Canal, who wrote about Tarbela Dam, who wrote about even Panuakul Chawni, and all that, nobody's writing, because they have created an atmosphere of unprecedented terror and fear. Peter was talking about this August. Look at, you talk to those people, how they were, they in the middle of the night, they came, they encircled 100 whole neighborhoods. They entered, they literally kicked a woman, children. Purpose is create fear, fear, and fear. And according to the Spanish general, if you instill fear in the minds of your enemy, you already won that war. They want to win that war. And they know Sindhi national movement, there's generally everybody says, okay, can you win the seat? One seat? No, we cannot win the seat. So they say, okay, these people, they cannot win the seat. There are many other criteria. If you look at the Freedom March of 2012, look at the people in Karachi. Hundreds of thousands of people. When Benazir's body arrives, everybody chants, Nakape, Nakape. This is nobody else's work. This is nationalist done. But now they have tried to break there. They have tried to break the resolve. They have tried to break their organizations. But
in these very difficult times, there is no other way. We are standing on the verge of the history, which will determine our future, which will determine future of our coming generations, which will determine the future and the prospects of peace in this entire region. And therefore, this is not a small region, it's 50% of the world's population. Therefore, we have got a huge, huge historical responsibility. We have to come together. We have to unite. Weaker we might be, we have got very few resources. Pani nae pand ganu agyan rao runjan. Not many things at our disposal. But we have got one thing. We are the owners of this land. This land belongs to our fathers and forefathers and forefathers and forefathers. This is not only a nation. Sindh is a civilization. We have to save it under any cost. We have to come together. We have to unite. And with our unity, with our humility, with our wisdom, with our sacrifices, with our commitment, with our consistency, we'll find the way. We always have found. This is not the first time. And we are not the first nation in the world. We'll find our way. They want to bury us. Tell them. They want to bury us. We are seeds. They want to perish us. Tell them. We will prevail, and we will. Ye penji karani baraniya, par sindhoyad na maraniya. Ye penji karani baraniya, par sindhoyad na maraniya. Aakhri raat guzraniya, to cho ghabrayo aap pera. Sindh salamat, saat salamat. Thank you very much, Dr. Lakku Luana. It's always inspiring for our nation. Our chairwoman's speech. Now I'll ask our new elected chairwoman, Dr. Rubina Sheikh, to come and give us a speech. So I'm just going to generally say thanks. I really would like to thank our team for their hard work to organize today's event. And I also thank the speakers and participants because it's been a long day. So I really, to make this event successful. This year, we particularly have a challenge to organize this event due to some unfavorable reasons. And I really want to talk about these things. 3 times our venues has been cancelled because they received threatening emails and threatening phone messages that we will do the demonstration. So our events were cancelled also 3 times. So I'm really, really grateful for the participant and really grateful for my team who actually made this possible and successful. And so well done. Thank you. I also like to thank our organizing outgoing World Sindhi Congress outgoing team, in particular Ada Lakku, and it will be really hard for me to fill into his shoes, and but I would continue to work under his supervision because there's no I've got to learn a lot. So I'm really grateful for Ada Lakku and other all executive committee member. Ada Gul, Ali, Farhan, Saghir, Asif, Hidayat, Umaid, Rahman. They dedicated to work last 10, 15 years and with a leadership and commitment. I also like to thank our hard-working members who continuously been supporting and working hard behind the scenes, whose names never been really disclosed, is Harish Kumar, Rustam, Mozam, Lalchand, Shehzado, A.D. Kirio, Sikandar, Ada Sattar, Abdul Rauf, Abdul Haq, and wider Sindhi Sangat UK team who really worked hard to make it this successful. I really, from my heart, I'm saying it that our success is their success, and we cannot be successful without their support. So I really solidarity to them. So I really want to expand.
There's a lot of talks going on, 3 sessions. The first session was about the role of diaspora, and we all agreed that we, all diaspora organizations, whatever we are doing, whatever our role is critical. It's a catalyst to advancement of Sindhis. So be proud what are you doing, and the key point is to work in a collaboration and have a unity outside, and that's really important message in our first message we came. In the second session was all about on the resources. It was a really sensitive issue. It is a very sensitive issue for us, resources and mismanagement of our land management and resources and water shortage and all those areas which a lot of experts have spoken about it, and I'm not going to repeat it. But this is a really critical issue for us, and I really think on these issues we should be working together. It's not a World Sindhi Congress agenda. It's not only any organization issue. It's an issue for Sindhi survival, and it's our community. And that's why I really urge you and request you to work with us on at least on this matter, on a policy level, on writing the strategy, on the campaign, on resource issue. And it should not be the case that the CPEC type of project or Zulfikarabad type of project are announced and done without our consent, without we people being involved in this decision making. And we need to bring this power to resist those sort of unfavorable projects. In the third session, we talked about human rights situation and defender and the other oppressed nation in Pakistan. There was a lot of talk about, we really welcome Peter Thatcher's suggestions. And actually, we've been looking on those areas of strategic alliances. We've been working in the form of Poonam. We did work previously. We might need to increase that activities. But in UK, we had a Sindhi Baloch forum, which we have been really successful. And you could see that we have worked last 10 years to 15 years in a collaboration with Baloch brothers. And I welcome others as well in that. And in terms of rise of fundamentalism and extremism, I think there's a fundamental issues of the how they have actually infiltrated in our nationalist movement, which some of journalists mentioned about it. And we do recognize that. And the reality is that to date, we have 24,000 madrasas in Sindh, in Pakistan, and majorly in Sindh and on border of the India. And these all are managed, supported by the Islamabad. We are using and the teaching in school, the curriculums are so radical that we are brainwashing our young children. So these are some core problems which we need to address and look at it, the causes why we have rise of fundamentalism. Without going into detail, I really would like to bring the attention of WSCC role. How are we going to plan in the future and what we are doing? WC will continue and engage in United Nations and European Union and UK to raise voice against violence of human rights in Sindh. We will continue this core work more than ever before. We will continue our international lobbying despite of resistance from Pakistani intelligentsia in Europe. We are faced extreme challenges from Pakistani establishment in Geneva, in London, in Brussels, and I will not I can give hundreds of examples on what had happened to us, but we will remain determined. We will determine that we will be stronger than ever before, and we will face the challenges with your support, your solidarity. We will continue to work on our core operating principles of non-violence and secularism. Our activities will remain focused on Sindh, Sindhis, and other oppressed nations and Baloch. We will include a couple of core principles more, introduction of mainstreaming diversity and inclusion. We will make sure that WC's future committees are fairly represented by women and other minorities. We will focus in future for next 2 years, mobilization of youth, which is a very important thing, is a lost. We haven't left this area, we have not really focused before, but we will continue on that. And hard to reach communities. We need to take our minorities with us in this movement. This is a case of Sindh. It is not a case of only one religion in Sindh at all. So that's really it. We will make sure that this is more streamlined. Today is the 28th year of World Sindhi Congress, and we are making history, and you are making history as well with me for your motherland.
Your motherland needs you, and we recognize that. We may need to be in this country or outside Sindh for various personal reasons and or political reasons to some extent, and not able to serve our people inland. But being away from our motherland must not preclude us serving our nation and working for our marginalized people and brothers and sisters. I'm asking for your time to work together for betterment of Sindh and Sindhis. Your each and every minute has a value for our nation. Believe me, to your time, which has been a hard time, but has got some impact. People feel supportive when they hear that we are sitting outside and is still talking about and considering and thinking and planning for their well-being. We must unite. I think unity is very critical in United Kingdom and US as well. I just been to Sana'a as well early this September. My messages continue. Unfortunately, some of our organizations are facing challenges and disintegrity by some unfavorable actors or external actors. But we need to commitment. We must continue to be united and work for our marginalized people. We must include our youth. Recognizing youth is very important. Let's join hands to resist the tacit and explicit attack on us, and join the hands together to say no more illegal occupation of our land, no more robbery of our resources, no more abduction of our young daughters on the name of religion, no more attacks on our indigenous people, no more poverty, no more bullet-ridden bodies of our brothers, and I say no more Pakistan, where our rich nation's people live in extreme poverty. GSN. Thank you, Rubina. Now is the resolutions. I'll request Sagir Sheikh to come and present resolutions and conclude this session. Sagir Sheikh. Thank you very much. Thank you, Dr. Rubina Sheikh, and thank you, Dr. Lakulan, Oidayat Bhutto, and other guests. I won't take here much of the time. I have already distributed the resolutions draft, which with the help of our members and executive committee, we drafted. And I don't think we have time to read all of them. What I will do is go through just the titles of them. So before I go, we have 18 different resolutions proposed by the executive committee and our membership. And I bring to your attention, so number 1, right to self-determination. If there is anybody have objection. Agree. Okay. Number 2 is about integrity of Sindh. Agree. Number 3 is about extrajudicial killings, abductions, arrests, and attacks on Sindhi nationalists. Number 5 is on the violence against indigenous Sindhi Hindus. Number 6 on proliferation of extremism in Pakistan. Number 7 is on education. Number 8 is on bad governance, lack of development programs and employment opportunities. Number 9 is on protecting the demography of Sindh. Number 10 is on language and culture. Number 11 on enforced disappearances and extrajudicial killing of Baloch activists and leaders. Number 12 on extrajudicial killing, harassment of human rights defenders, and curbs on civil society work in Pakistan. Number 13, the suppression of religion and state affairs. Number 14, human rights violations and international community. Number 15, environmental injustice, exploitation of Sindh's natural resources. Number 16, finances and tax. Number 17, illegal land acquisition in Sindh. And finally, number 18 on China-Pakistan economic corridor. Do you wish to add any new resolution? What I want, with the permission of chair, I want to add a resolution about this so-called threats of war between India and Pakistan, and call for the peace and sanity in the region. Agree. So I will draft that, and so because there is a lot of discourse going on about the war, and we need to propagate the peace. So thank you very much. Yeah. So okay, guys, the political program, speech program is over. सामाईन वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां गुज़िरियल छंछरु ॾींहुं लंदन में
28वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जी मुकमिल कार्रवाई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पारां अवां जी ख़िदमत में पेश कई वई। असांजी इहा कोशिश हूंदी आहे त सिंध जे हवाले सां दुनिया जे कहिड़े बि शहर या मुल्क में सिंधी गॾिजनि था उन्हनि प्रोग्रामनि जी मुकमिल कार्रवाई असां ताईं नशर करण लाइ पहुचाई वञे, जीअं असां दुनिया जी कुंड कुड़छ में आबाद सिंधियुनि ताईं सिंध जो आवाज़ु पहुचाए सिंधियुनि खे हिकु लड़ी में पोए सघूं ऐं जिन हालतुनि खां सिंध गुज़री रही आहे उनखे हिकु मुठ थी मुंहुं ॾेई सघूं। सामईन प्रोग्राम जी पुॼाणीअ ते पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओडो खे इजाज़त ॾींदा। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए, सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन